Hey, welcome to Let's Grow Together with Kalyan, Shruti and Richa. ये पॉडकास्ट सीरीज बनाया ही गया है टू लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. ये ट्विटर स्पेस सीरीज को पॉडकास्ट में कन्वर्ट किया गया है सो एवरीथिंग इज रॉ एंड अनफिल्टर्ड. You will hear the audience asking questions to the guest as well. कि ये podcast series is going to be super insightful. So come with an open mind and I promise you बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So let's start the podcast in 3, 2, 1. Okay. So basically, welcome to this amazing space series. Let's grow together. जिधर हम amazing guests को बुलाते हैं, invite करते हैं, and we talk about a topic and we हम दिल खोल के बात करते हैं. And आज का topic है how to get out of a toxic relationship. And we have our guest for tonight, Vrinda Gupta. Vrinda का introduction थोड़ी देर के बाद, but let me just say hi to co-host Shruti. तो अनफॉर्चुनेटली जैसे कि मैंने बताया कि रिचा के नॉट जॉइन अस, तो आज का जो होस्टिंग है वो मैं एंड श्रुति करेंगे. होपफुली रिचा कैन जॉइन अस लेटर ऑन, बट लेट्स सी. सो श्रुति, हाउ आर यू? एंड ऑल्सो आई सॉ अ पोस्ट जहाँ पे तुमने वो फॉरेस्ट एसेंशियल वाला you wrote about that. I love that and the little girl that was there, and I loved it, but what made you share the story about it? Yeah, hi Kalyan. I hope you are doing great. So I posted about Malisha Kharwa. She is a 14-year-old girl who is from Dharavi slum, as you already know, and a lot of people know. So recently, this thing about her was going viral that she is from slum and then, matlab, she's doing great. So I researched a bit. Like I suddenly came across a news article and I researched a bit. Ki, matlab, who is she and what is she doing? Why is she getting so viral? So then I got to know that in 2020, this Hollywood actor Robert Hoffman, he saw her, the place where she's staying. So he saw her with her dad, and then that time she said that I wanted to become a model when I grew up. तो उसके बाद मतलब things started changing for her. He also gave her opportunity, and then she have also like signed to Hollywood movies. उसके बाद she do modeling, and recently she got the biggest brand deal. That was for Forest Essential. That was for her the biggest brand deal अब तक का modeling का. The only thing which I am hoping is that I hope like she's getting paid well for the work that she is doing from so long. And one of the most like the best thing about her which I loved so much was that she started her content creation journey on Instagram few years back, and she's doing great. She's doing amazing on that, and that is one of the biggest reason why she's getting so much of leads, brand deals, and a lot of people are knowing her. क्योंकि मतलब ऐसे कम एज में और आई एम नॉट श्योर हु इज मैनेजिंग हर अकाउंट बट एटलीस्ट लाइक शी डांस एंड शी सिंग एंड वट एवर शी इज डूइंग थोड़ा बहुत मॉडलिंग का भी तो शी कीप शेयरिंग अबाउट एवरीथिंग and she don't like give a damn about how she's living and everything but she's very aspirational तो मुझे वो चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी लगी कि at such a young age like she's so inspiring, she's doing amazing, and she don't care about what people think and what is going on around whatever life she have gotten. She's trying to make the best out of it. So that was very inspiring. And the Forest Essential signed her for this new campaign जिसका नाम है युवती collection, which is for empowering young minds. तो ये मतलब young लोगों के लिए कर रहे हैं वो. तो उसके लिए उन्होंने उसको साइन किया, which is another great marketing strategy भी ऐसे कह सकते हैं, because इस चीज की वजह से a lot of people started like knowing Forest Essential as well क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ वायरल हो गया. उसके बाद she used this hashtag Princess of the Slum in every single of her Instagram post. That is what I have heard. I was not able to check all the posts, but she used that. So that is such a like adorable thing. मतलब she consider herself as so. मतलब I just love the kind of mindset which she have, the way she talk, the way she do everything. I saw few of her videos and I just fell in love with the way the attitude she have embodied in herself, and the way she is so fearless and aspiring to others, people who are of their age and like young childrens out there. So I just love that. अमेजिंग. एंड आई एम श्योर कि कोई एजेंसी इन्वॉल्व होगी इसके पीछे, तो दे गेट हर द न्यू न्यू ब्रांड डील्स एंड एवरीथिंग. वैसा होता ही है. दैट एजेंसी विल ऑटोमेटिकली कम इन, एंड आई एम श्योर उसके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा है. सो या, आई एम श्योर कि उसको अच्छा पेमेंट मिल रहा होगा. आई होप सो. I hope so, right? या.
True. So, yeah, that was an amazing story, Shruti. Shruti, also mic थोड़ा बंद कर सकते हो आप? Yeah, thank you. So, that was amazing, and I'm sure everybody will agree to it. Ki kismat and everything depends a lot on the work that you do. जितना hard work करोगे उतना ज़्यादा फायदा मिलता है, उतने ज़्यादा opportunities मिलती है life में, and that's when things start to work in your favor. So now, moving towards our lovely, lovely guest, Vrinda Gupta, who is an amazing speaker and has been featured on She the People and also on Josh Talk. एज मैंने उनके दोनों चैनल में देखे, जोश टॉक के हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चैनल में, एंड आई लव द वीडियोस, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई इनवाइटेड हर. एंड सबसे पहले वृंदा, हाय, हाउ आर यू, एंड ऑल्सो हाउ वाज योर जोश टॉक एक्सपीरियंस? Hi, Kalyan. So, firstly, thank you so much. And thank you, all of you, those who have joined. This is my first live on Twitter. So, I'm super excited and I really hope that I can add value. And I don't disappoint Kalyan because उन्होंने बहुत मेहनत करी है, श्रुति और कल्याण ने. So, thank you so much for inviting me. And if I talk about my experience, Josh Talk, it was mixed, to be honest. When I saw the studio, I still remember I was literally terrified. I was like, यार मैं कैसे करूँगी? और वो भी मुझे ऐसा नहीं कि I had to talk about my business or I had to talk about as a trainer, because at that point I was not a very established trainer also. I was just starting. So I had to talk about my personal life and I did not know how much I will be able to talk and if I will be able to, connect with the audience. But आई रिमेंबर कि मैं जब स्टेज पर गई ना तब मुझे सिर्फ ये याद था कि टुडे व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टॉक, it is going to help all the people who are struggling in toxic relationship. Now my speech was not just relevant to female audience, it is also relevant to male audience, because anyone can be a victim of toxic relationship. It's not necessary कि हर बार एक wife ही होती है या एक लड़की ही होती है. So I just knew that whatever I talk can help people, and I just told, I spoke my heart out, whatever I've gone through, how my expectations were hurt, how was the relationship toxic, how did I decide to get out of it. So मुझे बस इतना ही याद है. उसके बाद मैंने जो बोला, जो भी मन में था मैंने बोला. And I still remember that after I finished, we finished shooting, when I just got down from the stage, and this director, who she was helping me कि अच्छा अभी आप pause करो, अभी आप बोलो. So she told me that आपने इतनी भड़ास निकाली है ना आज, like we could see the frustration, we could see the pain that you have gone through. I was like, yeah, मतलब पता नहीं कैसे, but जब आप अपना story बोलते हो किसी को भी, when you talk about your challenges, वो automatically वो emotions translate हो जाता है. It is not deliberate कि मैंने जानबूझ के मैंने बहुत aggressive बोला या मैंने गुस्से में बोला. It's just that my emotions came out at that moment. I had to vent it out, and I'm so glad that people could connect to it, and बहुत सारे लोगों ने connect किया. And when they told me, when they personally messaged me, that's when I realized the impact. Till then I just thought कि ठीक है, YouTube में video आएगा, Josh Talk is a huge platform, it's good for me. But I think whatever I am doing today, whatever kind of opportunities I've availed for myself, it started with Josh Talk. So I'm very thankful to that platform. It has given me so many opportunities because मुझे कुछ करना नहीं पड़ा. जोश टॉक का खुद का एक रेपुटेशन है, एक ब्रांड इमेज है, so that people don't really have to work hard. Like, you just have to go and share your story and the rest follows. So I'm really thankful to Josh Talk platform कि जब मैं initial stages of my career में थी, whatever I was able to push and whatever I'm able to do today, it's only because I got recognized on that platform. So yeah, that's about my experience with Josh Talk. Hmm. And plus, actually, Vrinda, that the entire, I suggest everybody to go for that video, and बहुत ही अच्छा video था. So much empowering and everything. And I would like to start this space with that story. Like, if you can share your story and how you got out of this, of the toxic relationship. So that would be amazing. Yeah, sure. So मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई आपको आकर बोलेगा
कि यू नो व्हाट, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या कोई आपका पार्टनर आके आपको बोलेगा कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ऐसा होगा नहीं. You have to identify the red flags by yourself. Now, some of the red flags that I noticed in my relationship was it all started through, you know, jokes. It all started on a very light level of humor, जहाँ पे यू नो सामने वाला आपका मजाक उड़ाता है. ह्यूमर इम्पोर्टेंट है एक रिलेशनशिप में, एक फन एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हँसो, बट एक दूसरे पर मत हँसो. दैट इज़ द डिफरेंस. यू कैन लाफ विद ईच अदर, यू शुड नॉट लाफ एट ईच अदर. तो जब ये बढ़ जाता है ना, तब वो इंसल्टिंग लगने लगता है. तो क्या होता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट गिर जाता है. तो मैंने ये नोटिस किया कि हमेशा से मुझ पर हँसा जाता था, मॉक किया जाता था, कहा जाता था कि ये तो ऐसी ही है, इसके पास दिमाग नहीं है, ये तो ऐसी ही गँवार है, ये डम्ब है, ऐसा-ऐसा बोलते थे. तो मुझे पहले लगता था कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, यही तो है ना, इट्स माय हस्बैंड ओनली, इट इज़ ओके. सो इट ऑल स्टार्टेड विथ एक्सेप्टेंस. बट देन स्लोली आई वाज़ रियलाइज़िंग दैट इट बिकेम अ हैबिट कि हर रोज़ बिना मुझे मॉक किए या बिना मेरा मज़ाक उड़ाए, होता नहीं था वो दिन कंप्लीट. और अगर वो मेरे साथ भी हो, यू नो, इफ इट्स जस्ट प्राइवेटली, इट्स ओनली अस, देन आल्सो इट इज एक्सेप्टेबल. बट इट ऑलवेज यूज्ड टू बी इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, इन फ्रंट ऑफ माय फैमिली, इन फ्रंट ऑफ हिज फ्रेंड्स. तो मुझे ऐसा लगता था यार, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? मतलब आई अंडरस्टैंड कि एक एंटरटेनमेंट होना जरूरी है, बट मैं यहाँ पे कोई जोकर या कोई सर्कस में तो नहीं काम कर रही हूँ कि मतलब मेरे ऊपर जोक्स ही क्रैक किया जाए. So it all started with that. And then another thing that I noticed was emotional infidelity. Now what is that? That is जब वो emotional intimacy है ही नहीं आपके relationship में. मतलब आप vulnerable नहीं हो सकते हो, आप अपने आप को express नहीं कर सकते हो, और अगर आप करते हो तो सामने वाला acknowledge नहीं करता है. It's just like I felt every day that I was just talking to a wall. मतलब जैसे आप एक दीवार के सामने खड़े होके बात करो, कुछ भी नहीं होने का है. वो दीवार आपको, द वॉल इज़ नॉट गोना रिस्पॉन्ड, एक्नॉलेज, रिएक्ट, सपोर्ट, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ रिएक्शन नहीं मिलेगा. सो इट्स जस्ट लाइक दैट, यू नो, डे बाय डे आई जस्ट फेल्ट दैट my emotions were not of importance at all. मतलब सिर्फ ये था कि now I'm married, so as a married woman, traditionally जो conventionally एक old school है कि हाँ, once you get married, your only job is to take care of the house, take care of the family, that's it. So मतलब ऐसा हो गया था कि now you're married ना, now it's your responsibility. I just felt like the other person did not share responsibility with me, did not empathize with me, did not take efforts to understand my emotions. सो दैट वाज़ अनदर रेड फ्लैग. फिर क्या होता था कि जब मैं स्टार्टिंग में, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज़ वेरी न्यू फॉर मी ना, तो शादी का तो एक्सपीरियंस किसी को ऐसा नहीं होता है ना कि मतलब शादी कर लो, एक्सपीरियंस हो गया. इट टेक्स इयर्स एंड इयर्स एंड इयर्स टू एडजस्ट. सो व्हेन एवरीथिंग वाज़ न्यू टू मी, आई डिड नॉट गेट दैट इनिशियल सपोर्ट कि यू नो, वृंदा, इज एवरीथिंग ओके? वृंदा, आर यू एबल टू एडजस्ट? कोई डिफिकल्टी हो रही है आपको? कोई चैलेंज हो रहा है? कुछ नहीं. मतलब ना मैसेज, ना कॉल. मतलब he used to just go off to his office irrespective of, you know, what I'm going through. And I still remember, मुझे नहीं पता आप लोगों ने, कितने लोगों ने मेरा जोश टॉक देखा है, बट मैंने उधर बोला था कि मैंने शादी जो करी, आई हैड टू गो टू गुजरात एंड ओनली माय मदर accompanied me. My dad was critical. राइट बिफोर द वेडिंग ही वाज डायग्नोस्ड विद ट्यूबरक्लोसिस, तो उनका राइट लंग में फुल फ्लूइड भर गया था, एंड ही वाज वेरी वेरी सीरियस एंड ही हैड टू बी एडमिटेड इन द आईसीयू. और तब उन्होंने मेरे को फोर्स करा, उनकी फैमिली ने, दैट नो नो, ऐसे कैसे, शादी तो करनी पड़ेगी. और मैं इतनी डम थी कि मतलब मुझे तब समझ जाना चाहिए था कि मुझे नहीं जाना चाहिए, और मैंने बहुत झगड़ा किया. But nobody listened to me. They were like, no, you have to go ahead and get married. So at that moment, guys, that was my biggest red flag. कि इतना होने के बाद अगर कोई इंसान आपको सपोर्ट करके ये नहीं बोल रहा है that no no, you have to stay with your dad, and rather that person is telling that no, you have to come all the way to get married, that's the biggest red flag. मतलब उस इंसान को आपकी फैमिली की पड़ी ही नहीं है, तो आप ऐसे इंसान से शादी करके उनका घर क्यों देखोगे when that person cannot respect your family. So these were the red flags. And yeah, I think these were the major red flags. And then slowly when things started to become worse, and then when the abuse actually started, that's when things started falling apart.
और मैं एक चीज़ आप सबको ये बोलूँगी कि फिज़िकल अब्यूज़ गलत होता है, मैं मानती हूँ, बहुत गलत है। ये ना हस्बैंड को करना चाहिए अपने वाइफ़ पे, ना वाइफ़ को करना चाहिए अपने हस्बैंड पे। बट मोर देन दैट व्हाट हर्ट्स इज़ इमोशनल अब्यूज़। बिकॉज़ जो आपके स्कार्स हैं ना, वो फिर भी हील हो जाएँगे। लेकिन इमोशनली व्हेन दैट पर्सन हर्ट्स यू एंड literally breaks your heart, that takes a lot of time to heal. So for me, अभी तक जो लोग मेरा काम देख रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि मैं कंटेंट क्रिएशन कर रही हूँ या मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही हूँ। आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट, बट समवेयर आई हैव नॉट हील्ड कंप्लीटली बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी टू एक्सेप्ट दैट समथिंग लाइक दिस हैड हैपेंड विद मी, वेयर इट वाज़ नॉट माय फॉल्ट एट ऑल। तो इमोशनली जो लोग आपको हर्ट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके टाइम मतलब आपके साथ सबसे ज़्यादा वो चीज़ रहती है। फिज़िकल अब्यूज़ इज़ समथिंग दैट that scars or whatever, that pain will heal over time. बट इमोशनली अब्यूज़ जो होते हैं लोग, वो बहुत टाइम लगता है उनको हील होने के लिए। सो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि अरे! मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं अभी तक उसे नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं अभी तक बहुत पेन फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। यू आर नॉट अलोन गाइज़, आई मीन यू आर नॉट एट ऑल अलोन बिकॉज़ मेरा जो इंसिडेंट हुआ है उसके बाद मैंने कितने लोगों के साथ कनेक्ट किया है। मैं एक प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ जिनका नाम है सोलअप, व्हिच वाज़ फीचर्ड ऑन शार्क टैंक आल्सो एंड they also got a sanction from them. They are a platform where anyone can talk about mental health issues. कोई भी किसी के भी साथ. So I'm one of the peers there. I've had conversations with so many people who are going through divorce. So trust me, guys, you're not alone in this journey of mental health. Everybody is going through something, and you're not alone. एंड आई पर्टिकुलरली आपने एक बात जो बोली ना कि हमारे अराउंड जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं इट्स ओके, चलता है, ऐसा ही होता है। बट दैट इज सो रॉन्ग, राइट? एंड ऑल्सो बिकॉज वी आर इन अ रिलेशनशिप एंड सामने वाले को समझ में आ जाता है कि वो हमारा फायदा उठा सकता है, एंड दैट पर्सन स्टार्ट्स मैनिपुलेटिंग एंड वो कंटिन्यू करते रहते हैं। एंड मुश्किल इसीलिए हो जाता है बिकॉज वी लव दैट पर्सन, एंड इसीलिए हमें उनके एक भी रेड फ्लैग नहीं दिखते। नाउ टू दैट वृंदा, you must be coming across so many women or men who talk about these things. Could you just tell us कि how to recognize toxicity? कैसे समझेगा even if you are in a relationship? ऐसे कुछ points आपने बताया अपने लाइफ के बारे में, बट ऐसे जनरली कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बिल्कुल ही रेड फ्लैग है एंड यू तुरंत उनको नोटिस करना चाहिए एंड एक्शन लेना चाहिए। हाँ, सो सबसे पहले तो जो आपने बात कही एकदम सही है। द सेम थिंग हैपेंड विद मी बिकॉज़ आई वाज़ सो मच इन लव, आई डिड नॉट मतलब मैंने नोटिस तक नहीं किया वो रेड फ्लैग्स को। मैं सिर्फ़ ये देखती थी, हाँ, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, आई फ़ील हर्ट, बट आई नेवर रियलाइज़्ड दैट इन इस एंटायर प्रोसेस में मैंने अपने आप के सेल्फ रिस्पेक्ट को ही कॉम्प्रोमाइज़ करा है। किसी और के सेल्फ रिस्पेक्ट को तो कुछ हो नहीं रहा है क्योंकि मैं उनको कंप्लीट रिस्पेक्ट दे रही हूँ, तो मेरी इज़्ज़त गिर रही है। सो ऑफ कोर्स दैट हैपेंस। एंड नाउ टॉकिंग अबाउट जनरल रेड फ्लैग्स, व्हेन यू डोंट कम्युनिकेट विद योर पार्टनर। अगर आप मोस्टली देखोगे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती ही है मिसकम्युनिकेशन से, कि आपने कुछ बोला, उन्होंने कुछ और समझ लिया, अज़्यूम कर लिया, कंक्लूड कर लिया, उसके बाद डिस्कस नहीं किया आपने और फिर वो बढ़ते जाएगा एंड वन डे इट विल बर्स्ट। सो आई थिंक लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? और जब आप ट्रस्ट नहीं करते हो, सी जेलस होना, पॉसेसिव होना, मैं ये बोलूँगी कि ये कॉमन है। मैं आप में से किसी को ये नहीं बोलूँगी कि यू विल नॉट फील जेलस इफ समबडी लुक्स एट योर पार्टनर। होगा, इट इज़ वेरी नॉर्मल, लेट्स नॉर्मलाइज़ दैट। बट देन उससे ना आपको अपने पार्टनर पे डाउट नहीं करना चाहिए कि हाँ, मतलब कि हाँ, हाँ, वो तो तेरे साथ ऐसे बात कर रहा था ना, तो तू तो करेगी ही उसके साथ। तो जब आप ऐसा बोलते हो, तो आपके पार्टनर को आप क्या कर रहे हो? मतलब यू आर नॉट इवन ट्रस्टिंग योर पार्टनर। दिस इज़ समथिंग दैट हैज़ हैपेंड विद मी बट बिफोर द मैरिज, क्योंकि उसको ये लगता था कि हाँ, लड़के आकर मुझसे बात करते हैं, तो उसको ये लगता था कि मैं अगर इन्फ्लुएंस हो गई, तो मैं इसको छोड़ दूँगी, और हमेशा से उसके मन में वो डर था। तो ट्रस्ट कहाँ गया? वेयर इज़ द ट्रस्ट? कांट यू सी माय एफर्ट दैट आई एम पुटिंग टुवर्ड्स यू? कांट यू सी दैट आई रियली वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप एज़ मच एज़ यू? सो व्हाई कांट यू जस्ट ट्रस्ट योर पार्टनर? और अगर कुछ प्रॉब्लम है, तो बात करके सॉल्व करो। आज के जनरेशन के लोग तो बात ही नहीं करना चाहते हैं। Nobody wants to speak out. Why? That is my biggest question. Nobody wants to speak, nobody wants to discuss, and yet everybody wants to conclude and fight. तो
आप जब तक अपने पार्टनर को कम्युनिकेट नहीं करोगे, सी दिस इज व्हाट इट इज, ये मुझे इस चीज में बुरा लगा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट एग्जैक्टली डिड यू मीन, टॉक इट आउट। बात करने से यू एक्चुअली गेट टू नो योर पार्टनर बेटर, so that is very important, I feel. So that communication, lack of trust, that is there. Again, one more thing that I would mention is to control each other. You should not control each other. अगर ऐसा ही था तो then why are you guys together? I mean, you guys are together because you loved each other. Maybe you got attracted to each other appearance wise. I agree, वो भी होता है. It is normal. लेकिन lifelong, what is going to sustain your relationship is not your appearance. It is how you people treat each other and how you people can coexist. And how you people can help each other to grow. Very important. मैंने अपने हर वीडियो में ये बोला है कि रिस्पेक्ट लव के भी ऊपर है. लव इज समथिंग, if you're doing an arranged marriage, it might happen overnight, it might take years. If you're doing a love marriage, it might make or break. But if you people can still respect each other and coexist with each other, nothing else matters. So that is very very important. तो मैं बोलूंगी कि ये चीज अगर नहीं होती, अगर आप एक दूसरे को कंट्रोल करने लगो, मैंने तो तुझसे ये एक्सपेक्ट किया था, तुझे तो ऐसा ही करना है, या मैंने आपको यही बोला ना तो आपको यही करना है, सो दैट कंट्रोलिंग बिहेवियर शुड नॉट बी देयर. So that is another thing. Another thing is also when you're only giving in the relationship, आपको कुछ मिल नहीं रहा है, and trust me, I have lived it 100,000%. मैंने उस रिलेशनशिप में अपना हार्ट एंड सोल एंड एवरीथिंग पॉसिबल इन दिस होल वाइड वर्ल्ड आई गिवन, बिकॉज इट वाज अ लव मैरिज फर्स्टली. सो आवर कास्ट वाज डिफरेंट. मैं मारवाड़ी हूँ, वो गुजराती है, ही इज अ जैन. आई हैव adjusted in every possible circumstance जो भी मेरे से बन पड़ा, because I wanted to keep that relationship going. But then I could not see anything in return. And I was not even asking कि मुझे materialistic happiness चाहिए, आप मेरे को ये लाके दो, वो लाके दो. नहीं. Small things really matter for girls, and small things really matter for guys as well. We often don't talk about men's mental health. हम जब भी डिवोर्स या ऐसा कोई स्टिग्मा टॉपिक, जो सो कॉल्ड इनको स्टिग्मा बोला जाता है, हम इसके बारे में बात करते हैं, तो वी ओनली टॉक फ्रॉम अ गर्ल्स पॉइंट ऑफ व्यू. व्हाई कांट वी टॉक फ्रॉम अ मैन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल? इवन मेन गो थ्रू डिवोर्स. ट्रस्ट मी, मैंने आपको जो 16 प्लेटफॉर्म का बताया, आई हैव हैड कॉन्वर्सेशंस विद मेन who are 30 years old, 35 years old, and they are going through a separation, and they are so much in pain, and they are so hurt, they are so broken. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां गो थ्रू करती है. नो, इवन मेन गो थ्रू. सो लेट्स normalize also understanding that men also have feelings. They can also fall apart, they also feel bad, they also feel hurt. तो ये जो होता है एक चीज, ये मुझे मुझे नहीं समझ में आती है. सो समटाइम्स इट कैन बी लाइक द बॉय इज गिविंग एवरीथिंग एंड द गर्ल इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग. इन माय केस आई डिड एवरीथिंग, लेकिन मुझे कोई लव केयर रिस्पेक्ट मुझे मिला ही नहीं. और मैंने हमेशा से उसको ये बोला, यू डोंट लव मी एनी मोर, इट्स ओके. मतलब इट्स अ 15 years of relationship. I've known him since my ninth standard, and 15 years of knowing someone and then realizing that that person doesn't love you after you have got married is the worst thing that can happen on this planet, I feel. But I was even okay with that. I told you, don't have love to give me, you don't give. You don't have anything to give me, don't give. Just give me respect. I think I deserve that for everything that I'm doing for us. So I think when it's all take and no give, that happens. And when you feel very drained emotionally. So I used to feel so emotionally drained. So for all of you listening, most of you are, I think, men and women are equal here, so that's amazing. So मैं जो भी बात कर रही हूँ, I'm talking from a general perspective. It's not relevant just for women, or it's not relevant just for men. It's for all of you out here who are listening. That इमोशनली जब आप ड्रेन आउट होने लगो ना, कि यार कोई सुनने को नहीं है, वो समझता नहीं है या वो समझती नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतना क्या हो रहा है. एंड देन व्हेन यू आर नॉट एबल टू बी योरसेल्फ, व्हेन बिफोर डूइंग एनीथिंग और बिफोर टॉकिंग एनीथिंग टू योर पार्टनर, यू हैव टू थिंक, अरे नहीं नहीं, बेटर है कि मैं कुछ नहीं बोलूँ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. देन रियलाइज दैट देयर इज अ मेजर रेड फ्लैग, because if you cannot communicate your feelings to each other, then that relationship is not going to sustain. So I think these are mainly the signs that I can tell you, for a toxic relationship. And अगर मैं ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव दूं, तो मैं ये बोलूंगी कि जहां अगर आप कम्युनिकेट भी करते हो
और अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हो अपने पार्टनर में, लाइक व्हेन यू सी दैट ओके यू हैव डिस्कस्ड ऑल दिस, you have told all of this, but you can't see an improvement, like again and again the same pattern of behavior, and that person does not give a damn, then realize that this is not going to work out. Kyunki if that person cannot respect your opinion, if your partner cannot understand your emotions, then there is no point of being in a relationship. So I think मेरे हिसाब से ये major red flags हैं. Hmm. And Vrinda, you also mentioned कि you were in a relationship 9 standards से. So, what really happened? Like, did you not notice these things starting? में? I'm really sorry if I'm asking you a very No, personal question. no, please, Yeah. please, you all can So, ask yeah. me anything that you want. I'm here Okay. to talk about toxic relationships. So there is no such rule कि कोई मुझसे कुछ नहीं पूछ सकता. आप जो चाहो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, because I'm here to help. Because Hmm. I'm trying my best that whatever I have gone through, I don't want people around me to go through. So that's the main reason why I talk to people who are going through this. Hmm. So coming to your question, of course, I did not identify it as red flags. मैंने देखा ही नहीं, because I was so blindfolded. I was so much in love with this person that everything that he did, every action of his, every reaction, every action, every word, I could only see the positive side to it. I could not even think for a second कि नहीं यार ये मेरे को ऐसा बोल रहा है, ये मेरे लिए कुछ गलत बोल रहा है. मेरे दिमाग में वो आया ही नहीं. And let me tell you a major discovery that happened with me. So guys, of course I've been through therapy, and I've stopped it for now, because therapy it just sounds like it's a therapy, but it is very heavy on you. क्योंकि वो आपके childhood से, आपके conditioning से लेकर आपके हर एक चीज को touch करते हैं. So therapy is very heavy. But yes, it is important, because you have to realize कि आपके एक नेचर का या आपके एक रिलेशनशिप का जो भी रीजन, जो भी हो रहा है, why is that happening, so that will only get discovered through your therapy. So when I was doing my therapy sessions, when my therapist asked me everything and she was trying to find out, उन्होंने मेरे को एक चीज बोली जो लिटरली ऑलरेडी माय हार्ट वाज ब्रोकन, एंड आफ्टर दैट आई डोंट नो, लाइक आई कुड नॉट जस्ट फील एनीथिंग फॉर अ कपल ऑफ डेज. आई वाज जस्ट नम. उन्होंने ये बोला दैट वृंदा, यू हैव नॉट लव्ड गौरव ओनली. I mean, his name is Gaurav. So you have never loved him only. You only love this person who is in your imagination. In reality, this person does not exist. And then she asked me a couple of questions. Ki, did he do this? Did he do this? Did he do that? I was like, no, no, no. And she's like, see, आपने फ्रेम करा आपके माइंड में कि ये इंसान ऐसा है क्योंकि उन्होंने आपको ऐसा फील कराया एक दो बार. नाउ यू पुट दैट पर्सन इन योर इमेजिनेशन, एंड यू आर ओनली लविंग दैट पर्सन इन योर इमेजिनेशन, एंड इन रियलिटी दैट पर्सन डज नॉट इवन एग्जिस्ट. So that discovery जो मुझे हुआ ना, that literally tore me apart, and I was so numb. I could not feel anything. I did not even know कि did I literally love a human being, or was I loving somebody in my imagination? What was that? So guys, this is also possible that you are if your relationship has failed, maybe you fail to आप बहुत बार ये सोचते होगे ना, अरे ये तो ऐसी है ही नहीं जैसा मैंने सोचा, या ये ऐसा है ही नहीं जैसा मैंने सोचा. क्यों? बिकॉज आपने इमेजिन किया कि ये इंसान ऐसा होगा, और आपने उस इमेजिनेशन को बिलीव कर लिया, एंड इन रियलिटी दैट पर्सन डज नॉट इवन एग्जिस्ट. सो दिस इज एग्जैक्टली दैट हैपेंड विद मी. Mhm. Also, the thing that you mentioned about appearance, wali cheese Vrinda, that is though something which happens a lot, like with people who are in their 20s or initially when they are dating somebody. And definitely, जो दूसरी चीज आपने बोली about the communication, that तो I completely agree. Communication is definitely the key. Vrinda, also, how can we prioritize our well-being in these kind of challenging relationships, जैसे such as toxic dynamics at work, या फिर with relatives, in-laws, or even parents as well, where avoidance is not an option? सो देखो, अभी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया. अच्छा, आप मेरे को बताओ, आपने मुझे पूछा कि प्रायोरिटाइज़ करना है हमें हमारे वेल-बीइंग को, और हम अपने फैमिली मेंबर्स को या सोसाइटी को हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो पहले आप मुझे बताइए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते, या हमारे वेल-बीइंग के लिए हमें उनके बारे में सोचना सबसे पहले ज़रूरी है?
What do you think? एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज मैं पेरेंट्स का एग्जांपल लेके बताती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि बचपन से हमने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड करा है। ऑल्दो ऐसे होता है कि बहुत लोग कॉलेज के टाइम पे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, बहुत लोग कर लेते हैं। बट हमारा एक माइंडसेट ऐसा डेवलप हो जाता है दैट वी फील वेरी मच मतलब जो पेरेंट्स चाहते हैं वी शुड बी डूइंग दैट। चलो बहुत सारे लोग ऐसा नहीं भी करते हैं, लाइक वी डू व्हाटएवर वी वांट टू डू एट टाइम्स, बट अगेन वी हैव दिस थिंग इन माइंड, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव, कि हम अपने पेरेंट्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए, या फिर वी आर मतलब somebody जिन्हें वी हैव टू टॉक टू देम नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज। तो that is the kind of mindset we have developed because of probably upbringing we were in during since the childhood. So that is the reason, मतलब चलो आप in-laws या relatives को कर लो, but parents को तो करना at times it is very difficult. I agree. So now अभी मैं आपको बताती हूँ. आपने जो बोला एकदम सही है. So now we Indians, we've been conditioned in a way that we've always been close to our family, our parents, our siblings, our ancestors, and we've grown up around them. ठीक है. Now when they make a decision for us, ठीक है, या when we decide on ourselves that this is what we want to do, this is the person that we want to marry, either it's going to be through our parents or either it is going to be through our decision. ठीक है. So now when you realize that a relationship is failed, it is not working, why is it important that we need to now also think about others? मतलब हमने हमेशा ऐसा नहीं है ना कि हमने किसी के बारे में सोचा नहीं है. We've been selfish throughout our life. Yes, we have only been selfish when we have thought of our career choice. कि हाँ, कभी-कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं बिज़नेस का ही कर लो, नहीं ये क्यों करना है, नहीं वो क्यों करना है, एंड देन you fail, you get up, and then again you start working. So that is the career aspect. उसको आप छोड़ दो. But अगर हम अपने personal well-being की बात कर रहे हैं, अगर हम ही अपने personal well-being को importance नहीं देंगे, तो हम कैसे expect कर सकते हैं कि सामने वाले भी उसके बारे में सोचेंगे? It is very, very simple. As long as we don't prioritize ourselves, how can we expect others to prioritize? It is as simple as कि अगर हम और आप बात कर रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि अरे यार वृंदा को तो मेरे से रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए, तो मैं भी तो यही सोचूँगी ना कि श्रुति को भी मेरे से रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए। तो जब तक मैं अपने आप को ऐसा ट्रीट नहीं करूँगी दैट आई विल प्रोटेक्ट माय सेल्फ रिस्पेक्ट, हाउ विल यू गिव मी दैट रिस्पेक्ट? यू विल नॉट बी एबल टू. अगर मैं आपको अंडर कॉन्फिडेंट लगी या मैं आपको बोल रही हूँ मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, तो आप कैसे, हाउ विल यू फील इंस्पायर्ड बाय मी और हाउ विल यू वांट टू टॉक टू मी? यू बी लाइक इस बंदी को तो खुद का ही कुछ वैल्यू नहीं है. तो द सेम वे, prioritizing your mental well-being only comes from you. No one can do it for you. Not your mother, not your father, not your siblings, not your friends, not your cousins, not your relatives, no one. You have to take the stand. Again, it is not an easy role. ठीक है, मेरे लिए ईजी था टू बी ऑनेस्ट. टच वुड, आई एम ग्रेटफुल बिकॉज माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी सीइंग ऑल दैट आई हैव गॉन थ्रू. मेरे को कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने प्रायोरिटाइज कर लिया था मेरे लिए कि फॉर यू नाउ योर मेंटल हेल्थ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर थिंग फॉर अस. बट देर आर सर्टेन फैमिलीज जहाँ पे बच्चों के ऊपर ये प्रेशर आ जाता है कि एक तरफ करियर है, एक तरफ मेरे पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं कि रिलेशनशिप फेल हो गया और मेरा मेंटल हेल्थ ऐसा है, तो मैं क्या करूं? तो प्रायोरिटाइज करो ना, कम्युनिकेट करो अपने पेरेंट्स को. आई एम श्योर इट विल टेक सम टाइम फॉर देम. आई एम नॉट गोइंग टू बी डिप्लोमैटिक हियर एट ऑल. मैं यहाँ पे कोई डिप्लोमैटिक कॉन्वर्सेशन नहीं करूंगी. वो लोग बोलेंगे, वो लोग चिल्लाएंगे, वो लोग बहुत कुछ बोलेंगे. इट इज ओके. You have to take a stand for yourself. If you only don't take, who's going to take? So explain them that, I understand this is what I've gone through. I'm not okay with it right now. So for me, my mental peace is more important. If you people can support me in this journey, it's great. Otherwise, अगर आप लोग को आपका टाइम चाहिए, आप लोग लो. बट मेरा डिसीजन यही है कि मैं अभी अपने मेंटल हेल्थ पे ही फोकस करूंगा या करूंगी. बिकॉज अगर आपका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, तो हाउ विल यू बी एबल टू सर्वाइव? आप काम ही नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं होगा आपसे. एंड योर अदर रिलेशंस विल आल्सो स्टार्ट फॉलिंग अपार्ट. बट ट्रस्ट मी, वंस दे योर पेरेंट्स सी यू, they see that okay you're actually going through that pain, they will never refrain. वो लोग खुद आएंगे और आपको बोलेंगे या वो आपकी बातों को समझेंगे. और वो तभी होगा जब आप प्रायोरिटाइज करोगे. So it is very important that you communicate. Now for me it was easy because I'm a person, now I've become this person, like I want to constantly keep working. So my parents come and tell me that prioritize your health, please prioritize your health, and I tell them that I'm working. As long as I'm working, I'm sane.
But then there are certain families I know of जहाँ पे बच्चे actually मतलब मेरे age के लोग of course who have gone through something, they go and tell their parents, this is what I'm going to do. आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको नहीं समझ रहा है आप प्लीज टाइम लो, बट मेरे लिए ये आसान नहीं है. आपके जनरेशन में होता होगा कि ऐसा कुछ हुआ और आप लोग स्टिल बहुत स्ट्रांग रहते हो. मेरे लिए मैं अभी स्ट्रांग नहीं हो सकता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा. जैसे ही मुझे लगेगा कि आई हैव दैट स्ट्रेंथ, आई विल रिज्यूम. And actually, parents take some time, but they do realize and then they start supporting you. So I think that is very, very important. Hmm. And Vrinda, you mentioned how your parents helped you. कई बार ऐसा होता है कि the person has no one to support, and that person क्योंकि उनका confidence इतना कम हो जाता है, they don't know where to go and whom to ask and whom to trust. ठीक है, ये एक absolute stage होता है जहाँ पे things go really really wrong from there, right? ऐसे situation में एक person को क्या करना चाहिए? uh, and along with that, can that person go for therapy along with the fact that वो एक toxic relationship में है, so that उस therapy से उसको confidence मिले and that person can uh, then go out and find something. So the first question that I have is कि कैसे सीख करे support, किसको पूछे and किस पे trust करे, and the second is कि therapy अगर लेना है तो क्या थेरेपी लेते लेते बिल्ड कॉन्फिडेंस करते हुए रिलेशनशिप से बाहर निकल सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप से. सो दीज टू क्वेश्चंस. Yes. Okay. So first question, who to seek support? You have to identify that in your scenario, कौन आपको सबसे ज्यादा समझेगा. ठीक है. Let's be honest here, guys. हर बार जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स समझेंगे. ठीक है. I'm so grateful for my parents that they are broad minded and they told me that you have to start taking therapy. ठीक है. But let us also normalize that there are families who do not understand the concept of therapy, जिनको लगता है थेरेपी एक वेस्ट ऑफ टाइम है, पैसा वेस्ट है और कुछ नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कुछ लेना देना नहीं है. पेरेंट्स को यही लगता है. तो there are certain parents with that mindset as well. Okay, to be honest, initially even my mother used to think that therapy is of no use. Okay, but my father really believed in it. So there is going to be a mix. Now in your scenario, you have to understand, will your parents understand? If yes, please tell them. In my case, they would understand. मैंने अपने पेरेंट्स को अप्रोच किया. कोई कोई सिनेरियो में आपको पता है कि आपके फ्रेंड समझेंगे, या आपका कोई भी है जो भी आपसे क्लोज है, जो समझेगा आपको, सुनेगा आपको, उनको अप्रोच करो. Very important. Not necessary that always your parents will understand or always your friends will understand. Talk to them. ठीक है, talk to them. It is very important. Get their advice. And I would say after all this, once you have spoken your heart out, जब आपने एक बार अपने सारे फीलिंग शेयर कर दिए हैं, एक बार अपने फैमिली से जरूर बात करो. बहुत इंपॉर्टेंट है. चाहे फर्स्ट नहीं करो, बट टेक दैट एज अ सेकेंड स्टेप. दैट इज ऑल्सो ओके, बट टॉक टू देम. टेल देम दिस इज व्हाट आई हैव बीन थ्रू. ठीक है. और इन दिस सिचुएशन विच इज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, मुझे सीरियसली में आप लोगों का सपोर्ट चाहिए. एंड आई रियली वॉन्ट यू पीपल टू बी देयर विद मी बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी. नाउ देर आर टू आउटकम्स टू दिस. आइदर दे सपोर्ट यू विच इज ग्रेट, आइदर दे डोंट सपोर्ट यू, दे लाइक ये सब चीज में हम नहीं बिलीव करते, यू हैव टू वर्क इट आउट, ये वो. तो छोड़ दो. उनको बोल दो कि ठीक है, मेरे से जितना हुआ मैंने किया, ठीक है, और मुझे जो आपके साथ शेयर करना था मैंने किया, बट नाउ आई एम गोइंग टू डू व्हाट आई फील इज राइट, बिकॉज आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड माई मेंटल हेल्थ. They will take a while, but they will understand. So that is going to be the second outcome. Now, once you have spoken, you either know that your parents are going to support you for a therapy or they are not going to support you. If they support you, great. Therapy is a must, I'm telling you guys. It is not easy. मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ. बहुत बहुत heavy होता है, इतना overwhelming होता है कि हर therapy में आप सिर्फ रोगे. ठीक है. आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू क्राई इन एवरी थेरेपी सेशन आफ्टर माय थेरेपी सेशन, और आई यूज्ड टू फील सो ड्राउजी. मतलब थेरेपी के बाद मैं आंख भी नहीं खोल पाती थी, मेरी ऐसी हालत होती थी. सो थेरेपी इज नॉट इजी, दैट ऑल्सो आई एम टेलिंग यू गाइस. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कब तक आप भागोगे यार. यू हैव टू फेस द रियलिटी. यू हैव टू नो वॉट एग्जैक्टली happened in your relationship. क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपके पार्टनर ने ऐसा बिहेव किया, क्यों आपने ऐसा बिहेव किया, वेयर डिड यू पीपल फेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि ये गलती आप लोग वापस ना करो. एंड बाय दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल इन योर अनदर मैरिज, in any other relationship, whether it's friendship, whether it's with your parents, whether it's with anyone, any relationship I'm talking about. So definitely seek therapy.
Now if your parents don't agree, it's okay. You might want to take a therapy without telling them. I know people I have met on Solap and even otherwise who are taking therapy without the knowledge of their parents, क्योंकि उनके parents को पता ही नहीं है, ना ही वो support करते हैं therapy के concept को। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, बस ये है दैट दे हैव अ वेरी फिक्स्ड माइंडसेट एंड दे आर नॉट विलिंग टू बी ओपन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ थेरेपी। एंड लेट अस ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनके टाइम में थेरेपी ये सब कुछ होता ही नहीं था ना। उनके टाइम में तो डिवोर्स तक इज अ टैबू, कि अरे कैसे हो सकता है, लड़की को तो एडजस्ट करना ही है, लड़के को तो एडजस्ट करना ही है, कुछ भी हो जाए नहीं टूटना चाहिए। Take our parents generation as an example, how much struggles they have gone through in a relationship. But today why all this is happening? Because we are prioritizing our self respect, we are prioritizing choosing career and managing home. Because of that all their conflicts are happening. So it is completely okay if your parents don't understand, कोई बात नहीं, फिर भी आप थेरेपी लो, समझो उनसे कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों आपने कुछ किया, क्यों उन्होंने कुछ किया, आप में ऐसा क्या फ्लॉ है जिसकी वजह से आप इतना हर्ट हुए हो। So these discoveries will only be possible if you take a therapy, otherwise it is not going to be possible. So I think ideally that this is what I can talk about, how you can seek for help and what you can do. एंड ऑल्सो द पॉइंट यू मेंशन्ड कि हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन थी उनके लिए द स्ट्रगल वाज टू फाइंड बड़े सिटी में आना, वहाँ पे रोटी कपड़ा मकान खोजना, सो दे वर ऑलवेज बिजी विद दीज थिंग्स एंड ऑफ कोर्स दे हैव गॉन थ्रू अ लॉट इन देयर लाइफ, बट व्हेनेवर हम स्टैट्स की बात करते हैं तो इंडिया में ज़्यादा डिवोर्स नहीं होता, फॉरेन में ज़्यादा डिवोर्स होता है, बट आई फील दैट इट्स नॉट अ कंपैरिजन का थिंग बिकॉज़ आई एम श्योर कि कोई अगर डिवोर्स ले रहा है तो उसके पास एक सॉलिड रीजन है टू गो फॉर समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज नॉट समथिंग टू बी एक्चुअली वेरी हैप्पी अबाउट। दीज स्टैट्स डोंट मेक सेंस, किसी को नहीं पता कि किसी घर पे क्या चल रहा है। Makes no sense to me at all. And okay, we have one hand raised. Yeah, go for it, Anjali. First of all, Vrinda, hats off to talk about trauma and the way you explain everything. It makes so much sense, to be honest, and it takes a lot of courage. My question to you is how did you confront? I mean, like, what did you do, like, when you realized? Because you talk in great detail about how blinded people get in love and they sort of ignore the red flags. And I don't have the experience, but like listening to you, it made me realize that there are other people in my life, like even friendship can be toxic. Toxicity in a relationship is not limited just to your partners, but like your co-workers can be toxic and your friends can be toxic, your relatives can be toxic. I can relate to that, whatever you're saying, but with other people, in terms of other people. But I think I lack these the what should I say, the confrontation mode. So can you help me with that? Anjali, thank you so much. I'm so glad that I could add value, and you're extremely right. टॉक्सिसिटी हम जब बात कर अच्छा हम जब रिलेशनशिप की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में या तो ये आता है हस्बैंड वाइफ या आता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। व्हाई व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टॉक्सिसिटी इन द रिलेशनशिप, अरे रिलेशनशिप सिर्फ ये थोड़ी है, रिलेशनशिप्स कितने सारे हैं। द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद योर मदर, that you have with your father, that you have with your sibling, that you have with your grandparents, मतलब रिलेशनशिप सिर्फ एक नहीं होता है भाई। इट इज नॉट जस्ट वाइफ एंड हस्बैंड, देर आर मेनी relationships that exist in this world. And now talking about confrontation, to be very honest, I have not confronted till date, Anjali, okay, I'll be very honest, क्योंकि मेरे से होगा ही नहीं ना। मतलब मैं कैसे कर लूँ? मैं उतनी भी हार्टलेस नहीं हूँ। आई डोंट नो हाउ डिड ही हैव द करेज टू जस्ट लीव मी लाइक दैट। आई मीन ऑफ कोर्स आई लेफ्ट हिम। मैं घर से निकल के आ गई थी, बट वो मुझे वापस लेने तक नहीं आया। सो अगेन आई थिंक ही डिडंट वांट मी आइदर, बट आई डिड नॉट लीव विद एन इंटेंशन ऑफ लीविंग हिम, ओके। आई जस्ट लेफ्ट बिकॉज़ ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लग रहा था दैट आई हैव कोविड, and these people, they did not even
हैव द कंसर्न टू गेट मी टेस्टेड, क्योंकि इनके घर में शादी थी और इनको डर लग रहा था कि घर सील हो जाएगा। तो मैंने ये बोला कि मेरी हालत इतनी खराब है और आप ये बोल रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ होता है मैं अपने मम्मी पापा के घर पे क्वारंटीन हो जाऊंगी ना, व्हाट इज द वरी, बट दे डिड नॉट वांट मी टू डू इट एंड दे स्टिल वांटेड मी टू डू ऑल घर का काम। सो मेरा कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। एंड आई लेफ्ट बिकॉज माई मदर शी केम विद माई सिस्टर एंड शी सेड दैट हम इसको लेकर जा रहे हैं, हम खाली इसको अपने पापा और दादी माँ से मिलाकर हम इसको वापस छोड़ देंगे। एंड ट्रस्ट मी, दे ओनली गॉट मी विद दैट इंटेंशन। एंड प्रायर टू दैट, वाई माई पेरेंट्स केम, वाई माई मदर एंड सिस्टर केम, क्योंकि उनका कॉल आया था मुझे और मैं बहुत रो रही थी। एंड दैट वाज द पॉइंट व्हेन आई रियलाइज कि मुझे नहीं लग रहा है कि ये वर्कआउट होगा। एंड व्हेन दे कॉल्ड मी आई टोल्ड दैट इफ यू डोंट कम एंड टेक मी राइट नाउ, इन द नेक्स्ट 10 minutes आई एम ड्रिंकिंग लाइजॉल एंड killing myself, like I'm ending my life. And I literally had that लाइजॉल का बॉटल right in front of me, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे को लग रहा था कि मेरे लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है। दैट्स व्हाई दे केम रशिंग एंड दे टोल्ड अ रॉन्ग रीजन बिकॉज स्टिल दे वर रिस्पेक्टिंग माई इन-लॉज। तो मैं सिर्फ इसलिए गई थी ये सोच के, मैं जा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो आएगा मुझे लेने, वो मुझसे पूछेगा मैं कैसा फील कर रही हूँ। बट उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब ही जस्ट गेव अप, चली गई ना, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ये डिसीजन तब लिया, सॉरी मैंने लिया ही नहीं, माई पेरेंट्स टुक। सो फाइनली आई कन्फ्रंटेड देम, I told them everything that I'd gone through because I'd hidden from them. I did not want them to feel hurt. I told them everything and they instantly decided, you're not going back, Vrinda. We are not sending you back because we can't lose you. उनको पता था अगर मैं वापस जाऊंगी तो शायद मैं कुछ भी कर सकती हूँ, I might not be alive. And today, trust me, I'm only alive because my mother and sister, they called me, they video called me, my dad, everyone, they saw me and they knew something is not okay and they came to take me. वरना मुझे नहीं पता कि क्या होता. So I never confronted only. I never got a chance only to think, do I want this? Do I don't want this? I did not even get a chance to talk to him क्योंकि वो बंदा आया ही नहीं मुझसे बात करने के लिए, और जबकि हमारा घर सिर्फ 5 मिनट दूर है एक दूसरे से। वो मुझे कॉल तक नहीं किया, मैसेज तक नहीं किया ये पूछने के लिए कि आर यू अलाइव, आर यू ओके, कुछ भी नहीं। सो आई हैव नेवर confronted with it till date because मैं कैसे करूँ 15 years of relationship in just like a year or just like in 2 years I can't decide ना कि okay, I don't want you. I know what he's done is wrong. I know what he's done is a crime, but I'm not able to think from my mind. I'm only thinking from my heart that I still have, whatever emotions I had for him, I had for him. So I've not confronted. I'm just doing what I'm doing because मेरे को पता है कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और अगर मैं उसके पास वापस जाती हूँ, it's a disrespect to my parents. It's a total disrespect to them, their efforts, and I can't do that. And मैंने जो भी अभी तक करा है, जितने लोग आप लोग आज मुझे सुन रहे हो, जितने लोगों ने मेरे को आज तक देखा है, मेरा काम देखा है, उन सबको मैं डिसअपॉइंट करूंगी, क्योंकि वो सब मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि मैं शायद कहीं कुछ ठीक कर रही हूँ। तो मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं कर सकती, दैट्स द रीजन आई एम नॉट गोइंग बैक। But confrontation, I've still not done because, like I told, I've not healed completely. And I don't know when that's going to happen because it's not easy. So, and I know that there are a lot of people who will accept and tell, हाँ हाँ हमने तो confront किया, हमने ये किया वो किया, सब झूठ बोलते हैं। confront कोई नहीं कर सकता है, trust me, कोई नहीं कर सकता है। वो सिर्फ बोलते हैं लोगों को दिखाने के लिए, उनको लगता है हम बोलेंगे तो सबको लगेगा कि हम बोल रहे हैं, नहीं। कॉन्फिडेंस इससे नहीं आती है कि आप झूठ बोलो, कॉन्फिडेंस ये आती है कि जो है आप एक्सेप्ट करो उसको। सो I'm being very honest here. I'm not healed completely, and I don't know when that's going to happen. But yes, I'm doing everything possible in my capacity to at least work, to keep myself busy, to make my parents proud, because that's the only thing that's running on my mind right now, nothing else. So talking about confrontation, it's not easy, Anjali, but when you want to confront, when you realize that something is toxic, you have to confront. मैं आपको ये बोलूंगी, इसके पहले इतना बुरा सीन हो जाए जैसा मेरा हुआ, कन्फ्रंट करके सामने वाले को बोलो कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, understand from that person's way of explanation, if that person is genuine, give them one chance, no harm. मैंने तो मिलियन चांसेस दिए हैं, आप एक तो दे ही सकते हो। देखो अगर वो पैटर्न ऑफ बिहेवियर वापस रिपीट होता है, एंड इफ यू डू नॉट सी दैट रिपीटिंग, इट्स ग्रेट, बट इफ यू सी दैट हैपनिंग अगेन, then I think it's time you realize that that's not the relationship for you. Mm. And to that, I would say कि you spoke about this कि कैसे and you got out and everything. I feel that on researching about this topic, I found something called as a safety plan in order to get out of any toxic relationship. एक
प्लान करना चाहिए कि कुछ चीज़ों का प्लानिंग करनी चाहिए। एक सेफ स्पॉट होना चाहिए, एक सेफ प्लेस होना चाहिए टू गो, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फाइंडिंग राइट पीपल जिन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। ऑल दीज़ आर इम्पोर्टेंट, बट वृंदा आई वांट टू नो कि ऐसे टाइम पे ऑब्वियसली नोबडी कैन डू दैट, बट अगर किसी ने अपने सेफ्टी प्लान बनाना शुरू किया तो हाउ शुड दे स्टार्ट डूइंग इट? लाइक वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट दीज़ थिंग्स? ट्रस्ट मी, मेरा तो कुछ प्लान नहीं था। मतलब मैं बस गई हूँ, मैं वापस अपने घर आई हूँ और उसके बाद मैं उधर गई ही नहीं हूँ। उसके बाद जो भी हुआ मेरे पेरेंट्स ने किया, चाहे वो मेरा सामान लेकर आना हो, मेरे डॉक्यूमेंट्स लेने हो, जो भी है। ट्रस्ट मी कल्याण, आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू, कितना ही प्लान कर लो, ठीक है, कुछ नहीं होने का है। ठीक है, कितना ही प्लान करो, ये सब प्लानिंग आपका वर्कआउट होगा इफ यू आर आउटसाइड इंडिया। बिकॉज लेट मी टेल यू, आई वाज वेरी रिसेंटली टॉकिंग टू समबडी, सम ट्रेनर जिनकी फ्रेंड न्यूजीलैंड में है, एंड उसके बॉयफ्रेंड ने उसको थोड़ा सा धक्का दिया। शी कॉल्ड अप द कॉप्स, शी फाइल्ड अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एंड दैट गाय वाज पुट बिहाइंड बार्स। दिस इज समथिंग विच इज, मतलब सिर्फ एक धक्का देने से आप सोचो कि ये है। तो मुझे इंडिया से ये एक ही चीज का मुझे बहुत बड़ा कंप्लेंट है कि क्यों क्यों डोमेस्टिक वायलेंस को सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, क्यों फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज को सीरियसली नहीं किया जा रहा है। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि the law here, the cops here, sub मिले हुए हैं. Let me be very honest here. I really love my country and I've not left my country. I don't want to. But this is one thing that we have to accept. It's a brutally honest truth. People try to drag your case just because they want to earn money. People try to tell you कि पैसे दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आपको तो पता ही है सर, ये सब में कितना टाइम लगता है, ये सब कुछ नहीं होता है, बिना प्रूफ के कुछ नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हो? मतलब आप ये चाहते हो कि आप एक पेरेंट को ये बोल रहे हो कि उसकी बेटी को जहां-जहां लगा है आप उसका फोटो लेके भेजो। मतलब जहां मैं इतने पेन में हूँ, मैं फोटो खींच के भेजूंगी क्या कि ये प्रूफ रखो कि अगर बाद में काम आएगा? कौन करेगा ये? किससे होगा ये? मेरे को बताओ, कौन इतना स्ट्रांग है ये करने के लिए? तो आप कितना ही प्लान करो, ये सब चीजें अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो तो थिंग्स आर वेरी इजी बिकॉज यू कैन इमीडिएटली फाइल अ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एंड दैट पर्सन इज अवे फ्रॉम यू। बट दैट कैन नॉट हैपन इन इंडिया, इट कैन नॉट हैपन, एटलीस्ट फॉर नाउ तो इट कैन नॉट हैपन। आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर, बट अगर मैं एक प्लान बोलूंगी, द प्लान इज दैट यू कैन नॉट हैव अ प्लान। ठीक है, आप भले ही पासपोर्ट रख लो, आप भले ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लो, आपको क्या पता कि आपके पार्टनर को ऑलरेडी पता होगा आप ये सब कर रहे हो। ठीक है, और जब आप सोचोगे कि आप कहीं पे आप एस्केप होना चाहते हो या कुछ, आपको आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं मिले, वो बंदे ने छुपा दिया हो या वो बंदे को पता हो या वो बंदा आपको थ्रेटन कर रहा हो, क्या ही कर लोगे आप? सो कितना ही प्लान करो, कुछ वर्कआउट हो ना हो, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट द सक्सेस ऑफ द प्लान। येस, यू कैन ट्राई टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स विद यू, यू कैन कीप इट फॉर सेफ्टी कि हाँ कभी भी ऐसा सिचुएशन हुआ, बट ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। वॉट इफ दोज डॉक्यूमेंट्स आर अगेन टेकन बैक? एंड वॉट इफ दैट पर्सन ऑलरेडी नोज दैट यूर डूइंग समथिंग लाइक दिस? क्या पता आपको? तो ये चीज का तो मैं नहीं गारंटी दे सकती हूँ, बट ये बोल सकती हूँ दैट यू शुड ऑलवेज नो अ सेफ प्लेस एंड वन सेफ नंबर। मेरे लिए इट वॉज माई मदर, इट वॉज माई फादर एंड इट वॉज माई सिस्टर, प्रिडोमिनेटली माई डैड। कुछ भी ऐसा होता था या मम्मी को, मैं सीधा मम्मी को मिलाऊंगी और मैं रोने लग जाऊंगी, मम्मी ये हुआ है, मम्मी वो हुआ है, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। मम्मी बोलेगी ठीक है, मैं ऐसा ऐसा कुछ बहाना करके मैं आती हूँ तुझसे मिलने के लिए और तेरे को लेकर जाती हूँ थोड़ी देर। ये होता है प्लानिंग, आप यही कर सकते हो। तो have one contact or at least two, I would say, people who will safeguard you, who will protect you, who will be there for you. Find out that person, keep that person updated at all the times, and any point you feel that the situation is getting tense, please call up that person, tell that this is what it is, try to make that person reach out to you। ठीक है, या तो आपको निकलना होगा घर से और आपको आपका बॉडी लैंग्वेज करेक्ट करना होगा उसके लिए। मतलब सामने वाले को ये नहीं लगना चाहिए कि कि मतलब कुछ तो झोल है। तो मेरे केस में आई हैंडल्ड इट प्रिटी वेल। फर्स्टली आई हैंडल्ड इट बिकॉज मेरे को पता ही नहीं था, और दूसरी बात, मेरे पेरेंट्स ने, मतलब माय मॉम एंड माय सिस्टर हु केम, दे वर वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ हम तो खाली थोड़ी देर के लिए इसको लेकर जा रहे हैं बस। तो उनको पता ही नहीं था ना, अगर उनको पता चल जाता कि मैं वापस जा रही हूँ या मेरे पेरेंट्स का ये इंटेंशन है, ट्रस्ट मी दे वुड हैव प्लेड सम ड्रामा।
दैट नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत प्यार करते हैं उसे, ये वो, और हो सकता है मैं अभी भी उधर अटकी रहती। So it is very important that you have two contacts, you keep them posted, you make sure that either they come to you or you have some plan or some excuse through which you can escape and go to them, because once you leave then it's all sorted for you. उसके बाद अगर आपके documents को रखा, आपके passport को रखा, you can always approach the cops. And in case of female, you can always go to a women police station. I have gone there personally and they come to your house and they interrogate. अगर आप मेल हो, you can always go to the male police station जहाँ पे you have the male cops there. You can always talk to them. So there is always an option. So I think this is the best that you can do to escape. Hmm. Yes, Kavya, you were raising your hand. You have any question? Yes, I have this bad experience as well. Maybe yeah, Vrinda. I don't know her age. I don't know her. I don't know how to address her as well. But she said very genuine words that was 100%. I could even say 101% true to today's context that we have in our nation. This like when I was coming back from my hometown to the place where I study, I first of all, before I had this men phobia of not talking to any men in present in my life, or any men I meet. But recently I thought that it was the problem with my mindset, and I started speaking with all the men, like if they speak to me or for a genuine reason. And recently what happened was I was traveling from bus, like through bus, from my hometown to the place where I study. That person started speaking to me. That person was really good. Like I don't know if he's not good, but his way of approaching me was really good, and I felt happy because he was interested in things what I do. So we, in that case, nobody will be hesitant to share what they do, or what they make out of their potential. So I started sharing some things which were genuine to him, and later, at later part, after bus started moving, after an hour or so, he started misbehavior misbehavior in such a way like it can't be explained. He started, like, he tried for sexual misbehavior as well. This is something that is not at all addressed in our country. That is very much true, to be honest. And I resisted, and I told him that this will lead to a consequence where he can't even face it. I warned about it, and he was like, okay, I must not do this, and he sat a bit away from me. But yeah, but that is not forgivable. Even after sitting, like, far from me, he was looking at me very weirdly that I you can't even imagine. He was only looking at my thighs, hands, and like the legs, everything. That made me so uncomfortable. And I also knew this problem is not at all addressed in our country. Even if I claim that it happened, nobody would care about it. Nobody, like, they would suggest me or advise me only, and they would never take any action. I already knew that. I knew that it Understood. would happen. So, Kavya, I have to ask you something. What was your learning from this experience? Terrible experience. If you don't fight back, then you're gone. No, that. What is, if you're comfortable, what is your age, Kavya? 18. Okay, Kavya, first thing which you said during this conversation is that अगर कोई आपसे ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने लग जाता है या इफ somebody start asking you question about you, basically showing that they are interested in you and then you feel कि हाँ मतलब इसको तो बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक. तो मैं हाँ, यहाँ पे true. ये चीज बोलूंगी कि आप फाइट बैक वाली चीज बाद में आती है. पहली चीज ये होती है कि आप ऐसे सडन मतलब किसी भी स्ट्रेंजर से ऐसे शेयर करना, मतलब दिस इज रॉन्ग, राइट? Yes, I completely 100% agree to what you have said. I acknowledge it as well. Can can you please mute because the voice is getting echoed? Yeah, thank you. And I totally acknowledge your point that
This was the starting mistake that I have done to even speak with that kind of people. But I have this innocence, which is bad, of considering every people as good people or something like that. That's a bad thing. It's my bad. I agree to your point. That was the thing that I was not supposed to do. But when they approach in a genuine way, it doesn't feel like if I don't respond to them, I feel like that I have an ego. That was one thing. And yeah, that innocence of thinking that everyone are good was my Hmm. bad. I completely agree with Kavya that where she's coming from is the fact that ki she was naive and she trusted that person and उन्होंने expect किया कि that person would be nice and turned out to be a very different kind of a person. So yeah, Kavya did learn her mistake from her mistake, but again, it is not. I truly agree that गलती तो काव्या की भी नहीं है. It's just how the society has become this. It's very difficult. Before Yeah. I had this man phobia, but what I thought was it was my mindset that triggered this action of mine, and nobody is like that. It is my mistake, and I should not look at men like that. There are people who are good. I recently met few people who were really good, really made me feel that not all men are bad, not all people are bad. They made me feel so comfortable, and I started speaking to men as well. But some people are this. Also, Yes, Kavya, I am do. I in that list? Good list, wala. Of course, yeah. Okay, okay. Thank God. Vrinda, yeah, go ahead. Go ahead. Yeah. Yeah. So Kavya, firstly, kudos to you. Okay. Very, very brave of you. You are just 18 years old and you are so brave. I mean, when I was your age, I was much more naive than you. I was, and trust me, when I was like you, I did not talk to boys much. The only boy that I spoke to was my husband, and I did not talk to anyone else until I slowly entered into, my college life because my entire schooling was in a convent school. But it takes a lot of courage to talk about what you did on a public platform. So amazing, amazing. Just keep that honesty and that confidence with you. You will go a long way. And now talking about what you've gone through, yes, it's pathetic. We can't do. There are such monsters who exist in the world, and I would just tell that I don't feel that it is completely your fault because you are just learning now, right? So you learn from experiences. Even today, like I'm 28 years old, whatever I've learned from life is because whatever experiences I've gone through, and so is with you, and so is with everyone. So it's not your fault. It is just that sometimes we tend to overspeak because we just enjoy a conversation with someone, but without even realizing that the other person does not deserve to talk to us. So that happens. But I wouldn't say that it's your fault. But of course, it's a learning for you. And next time when you talk to people, you will be more careful. You will not overstep. You will not speak too much. Maybe you will just set your own boundaries. But one thing, please do not have this mindset that ये हो गया ना मेरे साथ एक बार, सब लड़के ऐसे ही होते हैं, मुझे तो किसी लड़के से बात नहीं करना, मैं उसी में खुश हूँ. So just because of one man, okay, he's not even a man, sorry, just because of one terrible person who has done this, we cannot blame the entire community of men. Okay, so that is one that I would want, I would really request you to. Number two, such things happen, Kavya. It takes a while because you get terrified कि ऐसा हो गया है मेरे साथ. टाइम लगता है, वो डर भी रहेगा आपको. इट इज नॉर्मल, सो प्लीज नॉर्मलाइज इट, डू नॉट फील बैड अबाउट इट. बट धीरे धीरे यू विल लर्न टू लेट इट गो एंड यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट नाउ. ट्रस्ट मी, यू विल बी मोर केयरफुल एंड मोर कॉन्फिडेंट. आई एम नॉट समवन हु विल एवर टेल एनीवन दैट आपकी ही गलती होगी, आपने तो ऐसे कपड़े पहने होंगे. डूड, इट्स आवर चॉइस. वी कैन वेयर वॉट एवर वी वॉन्ट टू. ओके, सो इट इज योर इंटेंशन. You have to control your mind. You cannot blame girls. We can wear whatever we want to. तो अगर वो, मैं Yeah. आपको ये बोलूंगी कि ऐसा इंसिडेंस मेरे साथ भी हुआ है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ होगा. बेस्ट है कि उस इंसान की तरफ देखो ही नहीं. देखोगे ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना. उस बंदे को जो करना है वो करेगा ही. आप तो उसकी आंख तो बंद नहीं कर सकते. आई विश वी कुड डू समथिंग बट वी कांट. सो आइडियली जस्ट You डोंट लुक एट can. दैट पर्सन. दैट्स इट. दैट्स I, व्हाट आई I स्टिल डू.
I have things to add upon your conversation, like Mm-hmm. what you've spoken so far. It was really good advices or good things that you've done, like you have said right now. First thing I would really say is that was really a savage reply that you said he's not a man. That was really savage. Yeah, that was a truth. And the other thing you said that like the one man was like this, and I stopped speaking to everyone. That was the case. That was past me, not present me. Before I had that mindset, but now I have overcome it because I saw, like, I got exposure, and I saw a lot of people, lot of men who are who deserve crown, on their head. Those people, those kind of men I've seen on, like, in daily life, because of the exposure I got in my college. Yeah, in the first semester I did not speak even to one boy in my class, but in the second semester I found the network of people, including boys. That is the one thing that I could say. And also the dressing sense. I was properly dressed, man, including my, like, I wore full sleeves, and that pant level also, that was full till that, the, what to say, the wrist of the leg. And in that case also, if they do, and I can't really imagine about the girls who wear shorts and all. Yeah, So, see, terrible. when people look at you in a very unethical way, the problem is with them and not you. And that's exactly my point, that we often tend to blame girls कि तुमने ऐसे कपड़े पहने। तो आप मेरे को ये बताओ कि दुनिया में जितने भी रेप केसेस हो रहे हैं, क्या सब लड़कियों ने मतलब शॉर्ट्स पहना था, ड्रेस पहना था? नहीं ना। No, 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 no. तो Yeah. प्रॉब्लम तो वो है ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो आपके माइंडसेट में है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, हाँ. एंड एज लॉन्ग एज यू लर्न टू इग्नोर इट, it is going to be better for you, because there are men like this, sorry, there are people like that and you cannot change. So even I do that. I mean, when I travel, because I do training programs, very recently I delivered in a college, so we had to wear sari. It was compulsory. So I still remember you. People think that I'm dumb, like I don't understand, or I don't, or I'm not able to assess. But मुझे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि वहाँ के कॉलेज के लड़के कैसे हैं, कैसा देखते हैं, क्या बोलते हैं। पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता ना। I don't even look at them. मैं आती हूँ, मैं अपना क्लास लेती हूँ, और क्लास के टाइम ही मुझे पता है कि मुझे उनको कैसे सबक सिखाना है। आई हैव माई ओन वे, सो आई टीच देम लाइक दैट एंड देन आई लीव. So I think you have to learn to live with that dignity, that just learn to let it go. They don't even deserve your attention. So just don't bother about such people. Just don't even look at them. They don't even deserve your eye contact. So that's something that I Yeah. would tell you. I would like to add upon this. This is a real great thing, that to ignore such disgusting people. But considering my own self, it's 100% true that I must ignore them. They don't deserve anything. Just they deserve shit. And yeah, I would like consider in the perspective where every people must be advantaged by this. I would like to take actions on such people who wants to create chaos in the society. I would have taken a greater step, and I would have destroyed his career. I would have destroyed everything. But I didn't want to do it. I have a nature of forgiving people, or to give second chance to people who deserve shit. Hmm. Okay, Kavya. So enough of. I mean, you are really, really angry on that person now. but but ठीक है, जाने दो Not उसको, भूल जाओ. really, not really. भूल जाओ. ठीक है. So Not now we will get really. Kavya. Let's get back to the space. बहुत सारे questions हमारे बाकी है वृंदा के लिए. So yeah, we. Yeah, Shruti, go गाइस, ahead. आई Go एम ahead. टेलिंग यू दैट आई थिंक अगर आपने सोचा होगा कि आज रात को आप लोग बिंज वॉच करोगे नेटफ्लिक्स एंड चिल, आई थिंक आपका नेटफ्लिक्स नहीं होने वाला है, इट्स गोइंग टू बी वृंदा गुप्ता एंड चिल. आई थिंक दैट्स व्हाट इज गोइंग टू आज काव्या, हैपन. हाँ, काव्या वृंदा की सारी यूट्यूब वीडियोस देख लेगी, सारे. हाँ यार.
For sure. Also, I Kavya is started very following him. talented, to be honest. No, Apart no. from, yeah, she is actually, and you are a state level player, right? Hey, I have the अरे tournament. मेरे लीग से You बहुत बाहर है यार ये प्लीज मेरे Yes, को yes. कॉम्प्लेक्स हो रहा है अब अटेंशन मेरे ऊपर शिफ्ट करो Okay, okay, okay. Now let Okay, Kavya, तुम्हारे बारे में कभी और स्पेस में डिस्कस करेंगे. Now let's go back to the space. ठीक है, श्रुति, go ahead. Your next question. Yeah, but I honestly I very much appreciate Kavya's honesty and everything that she's sharing, and I'm damn sure that she will learn a lot, like Agi experiences say, and she will definitely be able to take the right decision. Matlab, because श्रुति, तुम I, चुप हो जाओ. She will add something to this. I have one thing. I have only one thing. I नहीं have यार only मुझे one काफी thing. अच्छा लगा काव्या की बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा to be very हाँ honest. यार, I have only one thing to add if you permit me. हाँ please Go please. ahead, Kavya. Go ahead. Vrinda said that we can't do anything. What should I address you first in the first place? I'm not Vrinda. sure. मैं समझी नहीं क्या हुआ What should I You address can you call guys? her Vrinda. You can call her Vrinda. प्लीज Kavya. भगवान ने मुझे एक बहुत ही ज्यादा यूनिक नाम दिया है जिसके लिए मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं इसको बदलूं बट वो हुआ नहीं तो मेरा नाम वृंदा है आप मुझे प्लीज मेरे नाम से बताइए बुलाइए आई हाँ नो यार. दैट आई एम 28 years old बट इट्स ओके प्लीज नो दीदी नो मैम बिकॉज यहाँ पे है कुछ लोग जो मुझे बार बार मैम 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 अरे मैं नहीं हूँ मैम मुझे प्लीज वृंदा बुलाओ Yeah, seriously, I wanted to call you ma'am. That's why I asked you. गुड सी आई क्लियर्ड इट सो प्लीज कॉल मी वृंदा भगवान ने बहुत अच्छा नाम दिया है मेरे को सो यू कैन कॉल मी बाय दैट नेम Yeah, I can call you Vrinda ma'am. नो प्लीज ये क्या चल रहा है Then स्पेस में? okay, then I'm going back to the question. Yes, Wait, wait, please. wait, 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 wait. I have Hmm. one thing to ask, please. नो नो काव्या, इट्स ओके, बस हो गया. तुमको मैं नेक्स्ट, तुम काव्या अभी मत कुछ और. काव्या No, डी only one thing I काव्या was डीएम कर asking. देंगी वृंदा को. Just अच्छा, क्या है तुम्हारा वानी? फिर तुम अपनी स्टोरी सुनाती हो. बोलो फिर, जल्दी बोलो, जल्दी. no, यस. no, only one thing. Like just Vrinda said that we can't do anything about it, right? We can do anything about it because we have the power, we have the social media power, and people can piss them off. And Okay, also, yes. if you mention the police and central government, and if your Twitter account or handle is very powerful, if you mention them and what kind of security you are giving to the nation, that will change everything. Yeah, I agree to that. True. Nothing else. Yes. Okay, Shruti, go ahead. Yeah. So Vrinda, how can someone effectively establish boundaries? जैसे अभी हमने boundaries के बारे में बात करा, तो वो हम ऐसे effectively कैसे establish कर सकते हैं as a beneficial and practical approach for distancing ourselves from any kind of toxic relationship or toxicity around us? Yeah. So this is an amazing question, Shruti, to be honest. I love all your questions, but this one is my favorite because I did not do this. Okay, and I learned it a very very hard way कि boundary set करना क्यों important होता है. तो like I said, when Kalyan asked me about how did I, how was I in this for so many years when all of this was happening, a lot of people asked me this question to be honest, but my only reply would be that I did not see it as a red flag. I was so much in love with an imaginative person that I just chose to ignore everything and I did not set any boundaries. क्योंकि honestly मैं आपको बताऊं अगर आपका relationship बहुत healthy है ना आपको boundaries कभी set नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि healthy relationship is what even if you both don't love each other as much but you people respect each other you people have a dream you people want to grow with each other you people want to educate each other you want to try new things and all of that so if that is the case बाउंड्री क्यों सेट करनी होगी कोई जरूरत नहीं है बाउंड्रीज आप तभी सेट करते हो ना जब आपको पता है कि दिस इज गेटिंग अ लिटिल टॉक्सिक और दिस इज अनहेल्दी और you do not want to get close to that person maybe it's a friendship maybe you're meeting someone for the first time maybe it's your partner things are not getting too smooth तो तब आप सेट करते हो ना तो वो कब होता है कि when you need to start setting boundaries of course when you identify red flags and when you try to confront and address it and when you know that things are not going as per plan the first most important thing is that you need to be honest about what you need ठीक है which I was not मैंने
मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, बट मैंने वो बहुत अच्छे से ही नीचे गिरा दिया पूरा कि चलो ठीक है ना, आई एम इन लव। तो अरे यूर इन लव, आई अंडरस्टैंड, बट रिस्पेक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट ना। आप खाली देते रहोगे और आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो कितने टाइम तक सहोगे? तो मैंने भी 2 साल तक सहा ना, बिकॉज 2 years इट वॉज ऑफिशियल मैरिड रिलेशनशिप। आफ्टर दैट इवन आई कुडंट बेयर। सो व्हाई डू यू वांट द रिलेशनशिप टू रीच टू दैट स्टेज? So first thing is be very sure of what you need from that relationship, whether it's with your partner, whether it's with your friends, whether it's with your cousin, whether it's with somebody you're meeting for the first time, it's your colleague, it's your office management, senior management, whosoever, XYZ, doesn't matter. You need to know what you need. Okay, and once you know what you need, you really need to understand what your partner also needs. Now by partner, it can be your partner, it can also be some XYZ person, जैसा मैंने mention किया। सुनो उनसे, उनको पूछो या उनसे समझो कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक रिलेशनशिप से। एंड अगेन रिलेशनशिप गाइज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। सो व्हाट इज दैट पर्सन आल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू? नाउ ट्राई टू मैच। देखो वो एक्सपेक्टेशंस आप मैच कर पाओगे, या उनको बोलो आपको क्या चाहिए और देखो वो वर्कआउट हो पाएगा। Most probably, if you really respect each other and you want to be with each other now, you'll try anything in the world possible to make things work. Trust me, I've seen it in so many relationships. But in my case, I was ready to accept whatever was going on, but he was not ready to respect me at all. So that mapping hui hi nahi, and that's why the relationship fell apart. So understand what he or she needs and understand what the other person also needs. And then once you have told each other that this is what you need, make sure that you give each other that space. Very important. हम ये बोलते हैं, अरे space क्यों चाहिए, अरे time क्यों चाहिए, ये क्या है, अरे इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं है। सबको अपने लाइफ में थोड़ा स्पेस चाहिए होता है। लेट अस नॉर्मलाइज दैट व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, इट डज नॉट मीन ओके फर्स्ट few years will be very mushy mushy and all, but later when it gets overwhelming, sometimes you'll need a space. So you might as well say that, you know what, मैं थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ या मैं थोड़े दिन के लिए अपने घर पे जा रही हूँ, जो भी है, थोड़ा एक स्पेस लो, बिकॉज दैट स्पेस ऑल्सो गेट्स यू गाइज क्लोजर, बिकॉज देन यू रियलाइज ईच अदर्स इंपॉर्टेंस, एंड देन यू गेट दैट टाइम to sort out your differences, to calm down, to break the ice, basically. So, knowing what you need, knowing what your partner or the other person needs, and then communicating, as in communicate with each other, tell them when you need that space, make sure you give each other space, and then whatever you're communicating, please be very respectful. कभी भी ऐसा impolite हो गए तो it will only lead to an argument and then it will get ugly. So whatever it is, communicate with respect. It is very important. And if the other person is sensible enough, they will understand. In my case, he was only listening. बस वो कभी समझ नहीं रहा था. He was just listening to me because he had to ना, कोई और option नहीं है. मैं बोल रही हूँ तो उसको सुनना ही है ना. अब वो ऐसे तो बाथरूम में नहीं जा सकता या कहीं और नहीं जा सकता, उसको तो सुनना ही होगा मैं जो बोलूंगी. That is different. He was just listening. That's it. He did not work on it. So make sure that you guys work on it whenever that is the case. And slowly, when you see things getting better ना, फिर ये बाउंड्री का कोई इशू आएगा ही नहीं. तो ये जो कॉन्सेप्ट है बाउंड्री सेटिंग का, ये आप किसके साथ करते हो? ये आप सिर्फ उनके साथ करते हो जिनके साथ आपको क्लोज नहीं होना है, जिनके साथ आपको नहीं एक पर्सनल कनेक्शन रखना है. यू डोंट सेट बाउंड्रीज विद योर पेरेंट्स, यू डोंट सेट बाउंड्रीज विद योर पार्टनर. You don't, unless it is getting toxic, which in my case it did. So I think that this is the best way that you can set boundary, is communicate your needs, listen to what the other person also, because most often we only communicate. हम सिर्फ बोल देते देखो हमें तो ये चाहिए बट ये हो रहा है. अरे सामने वाला का भी सुनो ना. Understand what that other person is also expecting from you. So if you are ready to make that person listen to something, you should also have the strength, and you should also have that capability to listen to the other person as well. So being a good listener in a relationship is extremely important. Very much agree to that. Also, Vrinda, considering the multitude of available apps around us, like so many apps are there, dealing with the recurring presence of these individuals who disrupt our inner peace, like be it family, friend, or ex-partner, or matlab anybody from our family or relationships, it is very difficult to cut them off from our contact. So, how can somebody navigate this process of like cutting them off, or iska significance be, matlab how important is doing that?
Oh, I'm telling you, removing and eliminating toxic people from your life is the most essential thing that we need to do. Trust me, from the time I have gone through whatever I've gone through, and from the time I've come back home, um, it's been more than 15 months. I've just realized कि मैंने बहुत सारे ऐसे ना टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से मतलब लिटरली स्ट्राइक आउट कर दिया है। मतलब ऐसा होता था that they used to message and they used to be like, hey, you know what, this, और मैं तब उनको ना एक दो वर्ड में रिप्लाई करती थी और मैं क्या बोलती थी, मैं यही बोलती, दिस इज व्हाट यू थिंक, नो, गुड फॉर यू, ओके, थैंक्स। और उनको इतना गुस्सा आता था, बिकॉज मैं आपको बोलूं ह्यूमन नेचर क्या है, कि जब आप किसी को कुछ सुनाते हो ना, आपको ये लगता है कि हाँ, अब वो उस इंसान को ना गुस्सा आएगा, अब वो इंसान इतना ज़्यादा एजिटेट हो जाएगा। बट व्हेन यू डू नॉट शो योर एंगर, व्हेन यू आर वेरी काम, दैट कैन annoy the shit out of that other person. So I'm telling you that silence is the best treatment that you can give to some people, because some people don't deserve your reply. तो मैं ऐसे ही उनको बोलती थी और उनको इतना गुस्सा आता था, फिर ऑटोमेटिकली थोड़े दिन में आते थे, हे सॉरी, वी थिंक, मतलब आई थिंक दैट आई शुडंट हैव स्पोकन दैट, आई डिडंट हैव टू स्पीक दिस। मैं, ग्रेट, यू रियलाइज, गुड फॉर यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड लाइफ, बाय। लिटरली उनको ये लगता था कि नहीं, मैं बोलूंगी अरे सो स्वीट ऑफ यू, चलो हम वापस दोस्त हो जाते। अब मैं वो नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी भी नहीं समझी ना, देन लाइफ लॉन्ग आई एम गोइंग टू स्ट्रगल इन ऑल माय रिलेशनशिप्स, lifelong I'm going to be taken for granted, and I cannot afford to lose my mental peace. I've already lost it. It's not like I've recovered, but I cannot again afford to go in the same state that I was. मतलब at least थोड़ा सा better हुआ, I can't afford to get back. So I think it is very important to strike out toxic people. You, if अरे आप conversation करना तो आपके ही हाथ में है ना, लोग आपको मैसेज करेंगे, but there is something called block option, there is something called as scene option, scene पे छोड़ दो, सीन पे छोड़ दो बस, रिप्लाई मत करो। कितनी बार वो मैसेज करेंगे, 10 बार, 100 बार, उसके बाद बोलेंगे अरे यार कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं जवाब दे रही है या दे रहा है, दैट्स इट। That's the best thing that you can do. Trust me. There is one friend of mine, I would not take her name, of course, but one friend of mine who hurt me so bad. She believed someone she knew for like just 2-3 months. उन्होंने उसको कुछ बोला कि मैंने उसके बारे में कुछ गलत बोला है, जबकि she such a dear friend, मैं कभी नहीं बोलती, she believed him. So many years later, she saw my post on She the People and she's messaging me that, hey, I saw your post on She the People. I felt very sorry for you. I'm really sorry for what I did. I just left it on scene. And she actually called another mutual friend of ours and she said, अरे यार, उसने तो मेरा मैसेज सीन पे ही छोड़ दिया। लोगों को लगता है, हमें लगता है कि नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, बट दे एक्चुअली फील बैड व्हेन वी डू नॉट रिप्लाई। सो दैट्स द बेस्ट, द मोस्ट savage thing you can do is just leave them on scene. If I wanted, I could have replied that you don't have to be sorry for me. I'm not seeking sympathy here, and I'm very happy with my life right now, and I hope I'm making my parents proud. So for me, just marrying or settling down is not a career, it's not an option for me, ठीक है? वो मेरे लिए वो नहीं है कि सेटल डाउन होना मतलब शादी होना ही होता है। मैं बोल सकती थी बहुत, बट मैं क्यों उसको एक्सप्लेन करूं, जिसका खुद का ही माइंडसेट इतना खराब है, जो खुद ही अपने लाइफ में इतने कंफ्यूज्ड है, मैं क्यों अपना टाइम निकाल के उनका कंफ्यूजन सॉल्व करूं? दे नॉट इवन इम्पोर्टेंट टू मी. So I think as long as people keep constantly messaging you, you just leave them, na, block them or just leave them on scene. Do not reply to them. The more you reply, the more you're going to get irritated, and that is what exactly the other person wants. So you might want to do the silent treatment. This is what I do nowadays. I'm just very silent and calm. और मैं अंदर ही अंदर जो मन में आता है मैं सब बोल देती हूँ, बट बाहर नहीं बोलती हूँ, बस दैट्स द डिफरेंस. Yeah, I I agree. have one thing Okay, to Kavya. add. Go ahead, Kavya. पूछ लो. Yeah, yeah. Why are you laughing? तुम पूछो ना, तुम. Go ahead, Kavya. Go ahead. Yeah, I don't know about the level of toxicity that she had faced in person about like whom she was replying to. But I have a suggestion, or like if I'm not wrong, I have this suggestion of getting excited with the people who are excited. I don't know about the people you replied to, or you might be right on that place, but so many times in my life, I have felt so bad when people don't get excited with me for my success. So that is the real bad
experience that I had in my life, because I like, at least nobody else. I don't want anyone else to express their love towards me. I don't care, but at least I expect my relations or my friends or my family people to get excited along with me. And so many people do get excited for my success, for my happiness, for something exciting that I share. But there are many people who don't even Okay, like, Kavya, yeah. to interrupt you, ठीक है, आप मेरे को ये बताओ, did you did you have any rule book with you or did you have any contract जहाँ पे आपने ये लिखा है कि मैं आपके लिए excited होंगी और आप मेरे success हाँ, के लिए excited होगे, yeah, और yeah, कितने same. लोगों ने, no no, just hear me out, and not sarcastic, very, Yes, yes, this is yes. something that exactly my therapist did with me. So okay, did you sign a contract like that, and did anyone sign that contract with you? I would like to tell that there's no rule. They want me to, like, they want to get excited with me. There's no rule. Exactly. But So, yeah. expectations mat rakho, Kavya. The sooner you realize, Yes, yes, the better yes. it is for you. Because I think that Kavya, Shruti, all of us here, whoever has joined, everyone have been hurt because their expectations have not been met. Even me, all of us have been hurt. Stop setting expectations from anyone. क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं, जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी यही सोचे कि अरे मुझे ये करना है. मे बी दे हैव डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू एंड यू हैव नॉट लिव्ड अप टू दैट, राइट? सो द मोर you expect, you are going to feel hurt. The best thing is, stop expecting from anyone and everyone. The only person you need to expect is from yourself. Constantly push yourself, tell yourself that this is what you want to do, set small goals for you, try and achieve them. If you achieve, well and good. If you don't, again get up and start working. But stop expecting from everyone. किसी से कुछ मत expect करो, क्योंकि nobody is entitled to serve your expectations. So that's something that I I would tell you. Yeah, I completely agree upon that. Yeah, for 100%. Yes, there's nothing to add, but I don't expect from everybody. Some people only. Okay, Kavya. I mean, yes, you cannot expect from everyone, and also Vrinda ने add किया कि you have to be very careful and you have to understand कि the real expectations from yourself should come in, and that is Yes. the reality. That will not make you unhappy, to be honest. And if you find in this whole journey, if you find people who are really happy for you, that's great. Go ahead with that. You are really I have lucky, so but many people. great, Kavya. I would love to hear more about them, but let's go ahead with the space, okay? We are running short of time now. Kavya, Vrinda, sorry, Vrinda, I have a question for you. So, Yes. okay, so basically, we have spoken about a lot of a toxic relationship and everything. What I really want you to help us, yeah, help people with the fact कि कैसे somebody who is in this toxic relationship should build confidence, because it's very important. We spoke about this a bit, कि therapy can really helpful, but if that person has no access to therapy, how can that person build confidence? Because इन या फिर एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना है, तो उस टाइम पे जो कॉन्फिडेंस स्टार्ट करना है, उसके लिए कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए, कैसे स्टार्ट करे, एंड ऑल्सो हाउ टू मेक फैमिली एंड सोसाइटी अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ but a new bright beginning. It's very difficult to make people understand around us. I know uh, we can say that कि नहीं यार किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, but then it's so much important because they keep coming to you, they keep showing their vulnerability and they show their they are not okay with it, and कहीं ना कहीं उनका दिख जाता है कि they are very scared, and उनका यू नो उनका जो उनका उनका ये पार्ट देख के हमें भी डर लगता है. वी आर ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट एंड वी स्टार्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस. तो what I really want to know, Vrinda, how did you hold yourself? How did you start your new life? Where did you find the confidence? How did you do all of these things? I found in my parents, my sister, to be honest, and I still find in them. So, like I told, I'm not healed completely, but जब मैं उनको देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार लाइफ में कुछ करना है. मेरे लिए तो नहीं, बट उनके लिए तो जरूर करना है, क्योंकि
उन्होंने मेरे को जितना सपोर्ट किया, जैसे वो मेरे लिए खड़े थे, इतना झगड़ा, इतना प्रॉब्लम्स, इतना सब हुआ, they just kept me away from that I've already gone through so much, and they stood like a wall in front of me. I owe my life and everything that is possible to them. So whatever I'm doing today, it's only for them, and my only goal in life is to make them proud. That's it. मेरा और कोई गोल नहीं है. So अगर कॉन्फिडेंस की बात करें तो हमें कॉन्फिडेंस हमारे पेरेंट्स से मिलेगी, और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे तो वी ओनली हैव टू बी आवर कॉन्फिडेंट सेल्फ. ओके, देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स. इन केस इफ यू डू नॉट हैव एक्सेस टू थेरेपी, देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक सोलअप, जहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से आप मिलके बात कर सकते हो, पता है, जिन्होंने सेम एक्सपीरियंस गो थ्रू किया. उनसे सुनो, उनसे समझो उन्होंने क्या किया, कैसा किया. गेट मोटिवेशन फ्रॉम देम. सो वी ऑफन सीक मोटिवेशन फ्रॉम आवर क्लोज ones without forgetting that motivation and inspiration is everywhere around us. आप एक इंस्पिरेशन हो कल्याण. यू आर सो गुड ऑन इंस्टाग्राम, ऑन लिंक्डइन. श्रुति, शी इज सच अ ग्रेट होस्ट. She has such brilliant points to share, so I can get inspiration from her. Anjali, the way she has actually spoken about whatever she had to, the way she's expressed herself, I can get inspiration from her. And all the men who have joined, all these men who have joined, उनको क्या है, क्यों बात करना है उनको, हम तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं ना, but they're still here listening to me. So I get inspired by such men who do not get insecure कि एक लड़की बात कर रही है यार, क्या है ये, मतलब they are still there listening to us. So inspiration is all around us. We only need to look for it. मतलब you just open your eyes and look around. If it is your parents, it is your parents. If it's your friends, it's your friends. If it's some random person you meet today and they tell you that this is what we've gone through, that is your inspiration. That is your motivation to start. So मैं यही कहूंगी, और मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये सब होते ही ना बस करियर स्टार्ट करो, बस काम स्टार्ट करो. नहीं, सबका कोपिंग मैकेनिज्म अलग होता है. मेरा कोपिंग मैकेनिज्म अलग था कि मैं अगर अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करती काम में तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाती. सो माय कोपिंग मैकेनिज्म इज दिस, एंड इट इज स्टिल डेट लाइक दिस. For some people, I know their coping mechanism is to go for a vacation, to go with their friends out for a drink and chill, to go for a movie, to just go for a walk alone, to go for a solo trip. Do whatever you love to. Pamper yourself because you have gone through shit, and you deserve to pamper yourself because you have done the best to save a relationship. And if it's not worked out, you have all the right to give yourself love. Forget asking love from people. हर बार आपको लोगों से प्यार नहीं मिलेगा. The only people who can give you unconditional love and support are your parents, without asking, always standing by you, silently being proud of you, supporting you always. The other people will always have some expectations from you, and there will always be some arguments, there will always be some fight, there will always be something like this. So it's your time to pamper yourself. मतलब आपको जो अच्छा लगता है करो. You have all the right to give yourself all the love in the world if you did not get it from someone you deserved. That's it. As simple as that. So it is all around you. Just look for people, search for these platforms, take therapy, talk to more people, do what you love to do. If you don't want to work, don't work. किसको आंसर करना है, क्यों समझाना है सोसाइटी को, कोई जरूरत नहीं. क्यों समझाना है, कौन है. और ऐसे लोगों से तो भाई दूर ही रहो. मतलब कितने सारे मीम्स आते हैं रिलेटिव्स के ऊपर, मैं तो सच बोलती हूँ वो एकदम ट्रू है. मेरे केस में तो मेरे कोई भी रिलेटिव ने ऐसा कुछ कमेंट नहीं पास करा, सो आई वाज लकी. बट इफ देयर आर दीज रिलेटिव्स हु कम टू यू एंड शो यू सिंपैथी, यू नीड टू टेल देम दैट लिसन, मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए भाई. मैं कोई यहाँ पे ना सिंपैथी नहीं गेन कर रहा हूँ या कर रही हूँ. मेरे साथ जो हुआ ना उसका इतना सिंपैथी मुझे मत दो. राइट नाउ आई एम नॉट ओके, बट इन सम टाइम आई विल बी ओके एंड आई विल रिज्यूम. सो फॉर नाउ आई एम गुड. आई विल डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू. यस, राइट नाउ आई एम नॉट फीलिंग टू गुड, बट मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए. और अगर वो बोलते हैं ऐसा नहीं होता है बेटा, वैसा नहीं होता, अरे ठीक है भाई, आप अपने पास रखो ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू. उनको सीधा साधा बोलो, ओके मैं समझ गई, थैंक यू, बस बात खत्म. क्यों सुनना है उनकी बात. एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो. आपको किसी को भी जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है बिकॉज योर स्टोरी इज योर स्टोरी. ओनली यू नो वॉट यू हैव गॉन थ्रू. नोबडी एल्स कैन फील वॉट यू आर फीलिंग. So you are not entitled to explain anybody what you have gone through. I don't. मैं नहीं करती हूँ. अगर मैं मतलब ऐसे कोई इवेंट्स में जाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज मेरे को पता है कि ये सब स्टूपिड क्वेश्चंस आते हैं. बट देन या देयर आर सिचुएशंस, यू विल नॉट बिलीव, पीपल आर लाइक,
हो, नेक्स्ट शादी कर लो ना, दूसरी शादी कर लो, अभी तो लाइफ बहुत है आगे। तो मैंने उनको यही बोला कि मेरी जिंदगी का एक सक्सेस या सपना ये नहीं है कि मतलब मुझे शादी ही करनी है। मेरे लिए सेटलिंग डाउन इज नॉट मैरिज, फॉर मी इट इज being able to build a good platform for myself and to do well for myself to make my parents proud, and I think I can do that without getting married. So, as long as you know what you have to tell, and as long as you know when you have to keep quiet and leave, I think you're good. You don't have to explain anyone anything. मैं चाहूँ तो मैं इनको समझा सकती हूँ, अरे ऐसा नहीं होता है, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। अरे क्यों समझाना है मेरे को उनको? मेरे को और भी, वो तो वेले है ही, मैं वेली नहीं हूँ ना। तो मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, मुझे उनको क्यों समझाना है कुछ। True. Also, Vrinda, I very much agree to everything that you are saying. I would like to ask you life partner के बारे में. So, what are the key factors one should consider when selecting a life partner? While like there is some bit of understanding जो we all have, but still I would love to know the answer from you as you can enlighten us in a better way. अरे मैं आपको बताती हूँ भाई, ये कोई लिस्ट नहीं होता है। ये इतना इतना ये मतलब ये इतना मिसलीडिंग थॉट है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब मैं मिलती हूँ, मेरे ऐसे दोस्त हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, जो बोलते हैं ये हमारा लिस्ट है। हाँ, लड़का गुड लुकिंग होना चाहिए, लड़का स्मार्ट होना चाहिए, अट्रैक्टिव तो होना ही चाहिए, साथ में उसकी हाइट ये होनी चाहिए, काम तो उसको यही करना चाहिए, कम से कम इतना कमाना चाहिए, और मुझे चाहिए कि वो अब्रॉड में सेटल्ड हो, और मुझे चाहिए कि उसके कोई सिबलिंग नहीं हो। अरे भाई, तो मतलब तुम मतलब क्या चाहती हो कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ? मतलब यू वांट टू मैन्युफैक्चर दैट पर्सन फ्रॉम योर इमेजिनेशन, और यू थिंक दैट पर्सन एक्चुअली एग्जिस्ट एंड दैट पर्सन इज एक्चुअली वेटिंग कि कब ये आएगी, मतलब मेरी सिमरन कब आएगी। ऐसा नहीं होता है। एंड देन आई हैव सीन बॉयज हु टेल हमें ना लड़की ऐसी चाहिए जो मतलब करियर में अच्छा कर रही हो, हु इज वेल टू डू फॉर हर सेल्फ, हु इज एबल टू अर्न। और जैसे ही शादी हो जाती है, अरे मैं कमा रहा हूँ ना, तुझे कमाने की क्या जरूरत है? सो दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये लिस्ट नेवर एंडिंग लिस्ट है, लड़कियों के और लड़कों के, ठीक है? तो ये लिस्ट तो कुछ होती नहीं है। मैं ये बोलूंगी कि दैट कनेक्ट दैट यू फील विद दैट पर्सन, that is only because your wavelengths match, your thought process match, or maybe you just fit. Maybe that person is extremely opposite to you, or extremely opposite to that person, and that's how you complete each other. So I would not say that you have to carry a list in your mind. I would always say that whenever you talk to someone and you feel connected with that person, it's always good to, you know talk more, have more conversation, spend time with them, see how they treat people, see how they talk to people, see how they feel about their work, see what do they do otherwise, see how do they treat their family members, see what is their thought process, what is their mindset, how do they react to certain situations, how do they express themselves, what do they think of other people, how do they respect। मतलब ये सारी चीजें आप नोटिस करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अरे इतने मत खो जाओ वो इंसान के चेहरे में कि आप वो इंसान का मैनरिज्म ही नहीं देखो। मतलब आई अंडरस्टैंड दैट लुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डोंट डिसअग्री, बट द लुक इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग टू सस्टेन योर रिलेशनशिप्स। अगर ये होता तो इतने सारे लोगों का डिवोर्स क्यों हो रहा है? इतने सुंदर सुंदर कपल्स हैं, क्यों हो रहा है उनका? कंपैटिबिलिटी ही नहीं है। और क्यों नहीं है? because you got attracted to that person's appearance so much that you just decided that this person is the one। अरे भाई, appearance से क्या हो जाएगा? मतलब life तो you have to spend with that person's nature, right? Not with that person's looks। So it is very very important that do not have any list in your mind, ठीक है? The one only and only thing which is important is you need to respect each other। You need to make sure that you people grow with each other, you people have a dream and you people achieve that dream together, or you build something on your own together। ऐसा कुछ हो तो then that is okay, but just talk to people, I mean talk to that person more, get to know that person, understand if your wavelengths match, understand if you are compatible। very very important। और सबसे मेन पार्ट तो ये देखो कि वो इंसान रिएक्ट कैसे करता है, दूसरों के साथ बिहेव कैसा करता है, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। सो देर इज नो लिस्ट, आप कितना ही लिस्ट मंगा लो, वो कुछ नहीं होने का है जब तक आप वो इंसान के साथ कनेक्ट फील नहीं करते हो, जब तक आप वो इंसान को रिस्पेक्ट नहीं करते हो। और रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है विच हैज टू बी लाइफ लॉन्ग इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर पार्टनर। और जस्ट बिकॉज वो रिस्पेक्ट थोड़े टाइम के लिए रहती है और खत्म हो जाती है ना, इसलिए रिलेशनशिप्स एंड। सो डिड माइन, इट वॉज बिकॉज देर वॉज नो रिस्पेक्ट फ्रॉम द अदर साइड।
So yeah. बट वृंदा आपने अभी जो चीजें मेंशन करी दीज थिंग्स आर समथिंग जो मतलब मुझे लगता है एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए तो हम इन्हें भी की फैक्टर में कंसिडर कर सकते हैं जैसे रिस्पेक्ट वाली चीज बोल रहे हो आप वो दूसरे हाँ ट्रीट कर रहा है बंदा और मतलब a lot of other things तो एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए मतलब यस माइंड ये होनी क्लैरिटी चाहिए 100%। बट ये जो दूसरी टाइप की लिस्ट होती है ना भाई, जो मैं देखती हूँ, हाँ मतलब आई हैव अ फ्रेंड, लड़का ये लड़का वो, आई एम लाइक ओ माय गॉड, आई थिंक यू नीड टू मैन्युफैक्चर दैट मैन, बिकॉज आई डोंट नो वेयर द हेल दिस पर्सन इज इन द वर्ल्ड। और यहाँ पे मैं देखती हूँ जो मेरे लड़के दोस्त है ना, मेरी प्रीवियस गर्लफ्रेंड तो ऐसी थी ना, तो ये वाली तो मेरे को ऐसी चाहिए। अरे मतलब चाहिए, मतलब क्या आप क्या बाइनोक्यूलस लेके या पे क्रूज पे जाओगे क्या दुनिया दुनिया के कॉर्नर में ढूंढने के लिए कि मेरी किरण का है? अरे दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज सो स्टूपिड टू हैव दीज बेसलेस एक्सपेक्टेशंस, हैव जनरल एक्सपेक्टेशंस, नो मतलब थोड़ा सेंसिबल एक्सपेक्टेशंस। लड़के का हाइट तो मुझे 6 फीट चाहिए। अरे वो हाइट से क्या हो जाएगा? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ओनली। सो दीज थिंग्स आर बेसलेस। Okay, I would like to ask you one thing. Matlab, this is out of context, probably we can say, but according to you, who should be the person paying on the first date? Like, be it a man, like it should be a maybe. मरवाओगे मुझे श्रुति। ओह Even गॉड। I had that question. कल्याण, Even I कल्याण, want to know. what is Even I want to happening, know. Kalyan? Who is that person? Just I tell me, don't know. I You want have to to know. you have to answer this. I Even I really want to want hear to this know. answer. Go ahead, Avinda. Okay. Okay, genuinely, I'm telling you, uh, for my first date, genuinely, उसने पे किया था, ठीक है? मुझे ऑलरेडी हंसी आ रही है, आप लोग मेरे को फिर, okay, I'll try to be very poised and graceful here. So, okay, today if I go on a date, which is just imaginary, हाँ, imagine कर लो कि मैं ऐसे गई हूँ, I think I will pay half and I would expect the other person to pay half, unless and until वो इतना अ, ये होगा मारवाड़ी कि मुझे बोले कि आप ही पूरा पे कर दो, तो वो वर्कआउट ही नहीं होगा जिंदगी में, वो मेरा लास्ट डेट होगा उसके साथ। बट आई वुड आइडियली सजेस्ट दैट दिस, देखो ये हम जो इतना बोलते हैं ना, जैसे वी टॉक अबाउट विमेन्स मेंटल हेल्थ एंड वी टॉक अबाउट rape cases, molestation cases and all of that. तो why don't we also understand कि मतलब लड़के भी है ना दुनिया में, मेन भी है ना, तो उनको भी कोई चीज हर्ट करती होगी, उनको भी कोई एक्सपेक्टेशंस होते होंगे, सो वी कैन नॉट यू नो हर्ट देम एंड लेट अस नॉर्मलाइज दैट ऐसा नहीं होता है दैट एवरी टाइम द गाय हैज टू पे, द गाय ओनली हैज टू बी द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। दैट इज सो स्टूपिड। आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है। आप लिंक्डइन पे देखो कितने सारे फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं हु आर मैरिड, हु आर स्टिल वर्किंग सो हार्ड and doing so good for themselves. So it is not that only men should earn। जैसे ही लड़का पैदा हो गया, हाँ ये तो कमाएगा, क्यों भाई लड़कियां नहीं कमा सकती है? मतलब ऐसा तो कुछ है नहीं कि लड़कियां नहीं कमा सकती। सो आई फील दैट इट शुड बी ऑलवेज इक्वल। हाँ कभी कभी कोई ट्रीट दे रहे हो कि आपने कुछ सरप्राइज प्लान किया, वो चीजें अलग है, वो चीजें बहुत अलग है। बट आइडियली व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ डेट, even if you have asked for a date or he has asked for a date, doesn't matter because you have also gone ना, because you wanted to। वो तो आपको खींच के तो नहीं लेके गया कि जाना ही है मेरे साथ। तो अगर ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे आप लोग दोनों म्यूचुअली गए हो, so split ना, split and be honest about it। So tell it, once the bill has come, be very honest and listen, I really want us to split, because if you don't, I really will not feel good about it, because it was my decision also to meet you and I've had a great time. So it would be great. I mean, we could split. So I think we should definitely split. Hmm. Good answer, Vrinda. I agree. I agree. But actually, Kalyan क्या is हो so जाता happy. He is going to record this conversation and share it to his girlfriend or his potential crush that, see, this is what I want you to do. नहीं, but to be honest, Vrinda, if you think about it, ना ऐसा I have read a lot of books. तो books में कैसे बताया जाता है कि when we were hunters and gatherers, the women expected the men to be the the person जो उनको बचाएगा चीजों से and save करेगा, provider होगा, आई नो everything. राइट। अरे But मैंने अपने in हस्बैंड को today's सेव time, करा है, हाँ, कैन यू इमेजिन? मतलब यू विल नॉट बिलीव, मैं इतनी बड़ी गुंडी हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। ये तो आपको मैं बहुत ही ग्रेसफुल लगती हूँ लिंक्डइन पे। कभी आके पर्सनली मेरा गुस्सा देखो, जब कोई इरिटेट करता है मुझे, मतलब ऐसा होता है कि रोड पे अगर कोई
आदमी कुछ बोलता है या इरिटेट करता है, अरे मैं तो ऐसा सुनाती हूँ उनको, मैं क्या बताऊँ। मतलब वो बंदा मेरे को एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होता है, अरे कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। तो मैं बोलती हूँ उसको, क्या कुछ मत बोल, तेरे को कुछ नहीं बोलना तो तू कुछ मत बोल। तू तू मतलब तू कोई काम का नहीं है, तू रहने दे, मैं अकेली ही इनके लिए काफ़ी हूँ। तो मतलब मैंने तो किया है हाँ ये बहुत। सो आई डोंट बिलीव इन द स्टूपिड कॉन्सेप्ट दैट लड़का आएगा आपको बचाने। कोई करण जौहर की मूवी थोड़ी है यार, मतलब। हाँ, तो वही Yeah. वही वही मैं बोल रहा हूँ। तो क्या हो जाता है कि इन द रियल सिनेरियो, इन टुडेज वर्ल्ड, the men don't get to show कि क्या है, because women are also earning, right? So of course there's a masculine energy, feminine energy, that part is there, ठीक है। अब पता नहीं how people will treat it, but the reality is कि अब जब men नहीं दिखा पाते, somewhere women also expect कि a man to be a man where he takes control of everything when it comes to पहला date, right? उसके बाद of course it is, you can, Kavya please don't add something to this. Oh God. I But think guys, let us watch movie together. चलो बताओ आप लोग कौन सी मूवी देखोगे? it's I, very I confusing. wanted I agree I to wanted Vrinda to whatever add you said. humor, It's man. okay. I'm okay with splitting bills. यार चलेगा मुझे. I wanted to add humor. You, Yeah, go ahead. Add. you Also, said Anjali wanted to add something. Yeah, Anjali, go ahead. After Kavya, yeah, Kavya. no, no, no. First she is first. Okay, Anjali, go ahead. So I was reading something about this, like you just said, na, that's that protection and providing is expected from men. So just recently, I read that some women were talking, and they said that instead of protection, just don't harm the other gender, and that's the like the equivalent of the modern society. Because what men also get confused about is that about the idea of feminism and equality and equity, it's confusing for them and it's very confusing for women also. So they were only discussing about that, and I found that idea very interesting, that they said stop harming because we can take care of ourselves until and unless you go out of your way and do something stupid. So I think that that is where the line is now. That's what I wanted to say. Hmm. Okay, Kavya, what do you want to add to this? Yeah. Not to this, to something that you have said. अरे Like यार बोलो. because Guys, good night. वृंदा, don't- मुझे याद है वृंदा ने बोला था कि एक ही घंटे का स्पेस होगा ना, एंड आई सेड यस यस एक ही घंटे का होगा, एंड इट इज ऑलमोस्ट 2 hours. वृंदा, Guys, आर okay, यू? I मेरा have a एक मूवी question. आधा रहा है। Yeah, we have been. Yeah, and I Yeah, have a this. question for Vrinda. काव्या. Oh, one Okay, last let's do question. one You thing, Kavya. must Let's watch answer a this. movie together. You must answer this question at any cost. Please बोलिए. Why don't you follow anyone on Twitter? अरे, I'm new to this अरे space. हाँ, काव्या, right. वृंदा, why don't you follow me? Why don't you follow Shruti? Anyone on Oh my Twitter, God. not just Kalyan, Kalyan I Twitter can't or believe any. that you're telling this. But however, I will pretend that I did not hear what you said. But I'm very new to this platform, guys. मतलब, I know that I joined in 2015, but I only joined in 2015, and after that मुझे लगा नहीं कि Twitter exist करता है जब तक कल्याण ने बोला कि हम ये करेंगे। तो मैंने अभी 3 दिन पहले ही एक्टिवेट किया अपना अकाउंट वापस, एंड Hmm. you True, know, true, so true. oh my Also, पता God, नहीं क्या okay. होता अगर follow वाला I बटन पे क्लिक हो followed, जाता I तो. हाँ. followed Kalyan, I followed Shruti, I followed Kavya. I'm following everyone, whoever is listening. आपको भी notification आ जाएगा. I'm going to be the super stalker now. So yeah. Good one, Kavya. Good one. Okay, okay. With that, हमारा almost space खत्म हो गया है. So, यार मैं humor कहाँ गया? अच्छा क्या तुम्हारा, तुमको कुछ ऐड करना है? Okay, go ahead. कुछ ऐड Yeah, करना I want to. है? Yeah, go ahead. That won't like sound funny now because that was I'm adding to something that you've told in the past. You said right. Yeah, you said right that women expect man will be man. So I remembered men will be men moments. Yes, true. Guys, I Man, think this
conversation is going in a different tangent, and all the men are going to be very upset with me that they are not going to attend any more sessions. और जो ये ट्विटर पे मैं अभी एक्टिव हुई हूँ, मेरा अकाउंट शायद बैन हो जाएगा, तो हम इस बात पे Yeah. अलग से डिस्कशन करेंगे. Why True, did true. Yeah. Okay, Kavya, that's it. That's it. हमारे पास time नहीं है. Vrinda is also getting late. So we Yes, are I have done a with this. movie to watch. Yes. Acha, you even I okay? have got, Exactly. bro? She has a movie to watch. It's Even I so have got, important, bro. trust me. Okay. So thank you so much. We are all done with this space. Thank you so much, Vrinda, for coming in and sharing your knowledge, your guidance and everything. It was such an amazing space. बहुत कुछ I'm sure people have understood. बहुत कुछ सीखने मिला लोगों को. I love you, And Vrinda. I yeah, love you love you, guys Vrinda. too. Thank you so much. I was initially very nervous. Kalyan and Shruti know. I was like, अरे यार कैसे करना? मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ट्विटर पे लाइव कैसे जाते हैं. मतलब इससे बुरी हालत तो किसी की नहीं हो सकती है. So I think that justifies काव्या ने जो बोला कि आप किसी को follow नहीं कर रहे हो, भाई मुझे लाइव ही नहीं जाना आता, मैं follow क्या करूँ? अकाउंट ही अभी बनाया है मैंने, सब कुछ LinkedIn से copy paste किया है, क्या बताऊँ मैं आपको? So I'm so glad that I could add value to your lives, and I could I really hope that I could make a difference. And if I have to just say something last, I will just tell that guys always choose respect. I don't know about love. I don't know about these feelings. They might come, they might go, whatever. They might stay as well if you're lucky. But respect is something that should be dominant. Matlab, always make sure that if the respect is compromised, then that's not the right relationship for you. So this is something that I'll tell. Perfect. And Shruti, you want to add something? I lost in between and I was not able to hear what Vrinda was saying. But I mean, some network कुछ issue important नहीं happened. था, मैं बता So रही I थी कि just मैं wanted to ट्विटर पे thank कितनी Vrinda. Thank गवार you so हूँ. much, Vrinda, for joining us today. It was lovely having you with us and we learned so much. So yeah, and definitely I would like to stay in touch with you. There is so I much to learn followed you, from you. Shruti. I followed And you. thank you, I followed Kalyan, you for all. hosting this space with me. And thank you, Kavya, and everybody for joining us today. Thank you, Anjali. Thank you, Shruti. I think Vrinda, Shruti, can you close your mic? Yeah. So I think Vrinda, श्रुति का ना कुछ तो डिस्टरबेंस है, तो she could not hear you properly, तो इसीलिए वो रुक ही नहीं रही थी, वो Haha, बोलती no जा रही थी. issues. No issues. but but it was such an No amazing space. We problem. loved it. Yeah. And I I loved told you, right, interacting कि with all of देखना you. कैसे टाइम चला जाएगा, and it did went. I know it's been 2 hours, guys. Now, what you people should do, go follow me on LinkedIn, like my post, comment my Yes, post, yes, उसको yes, viral करो, क्योंकि मैंने आपको yes, आप yes, लोगों को 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया है. So, yes, 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 yes. oh God, I want hilarious. to say this last thing. Kalyan sir, Shruti ma'am, Anjali ma'am, Vrinda ma'am, everyone. I want to be in touch with you. Like, I really need your support. आपको तो भूलेंगे नहीं काव्या, टेंशन मत लो. I really need your support, guys. Yes, yes, Kavya, we are with you. Don't worry. Okay. Yeah, Yes. I'm not worried. Okay, you're not worried, but ठीक है, हम हैं आपके साथ. ठीक है, we are with you. Uh, Thank you. Thank you so much. yes. That's So, love. Okay, Vrinda, I guys, hope you will thank be you super. so much. Also, Vrinda, I hope you will be क्या super कल्याण? active on Twitter now. I'm just saying कि you will be super active on Twitter, right? I will try. Okay, cool. Thank you so much, Vrinda. Yes, And with thank this, you. yeah, yeah. With this, I'm Bye closing the bye, guys. space. Bye, Thank guys. you. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank Bye. you, everyone. Bye bye. Thank you for listening to us. And if you want to participate in live spaces, just follow our Twitter handles. हम ऐसे spaces हर हफ्ते करते हैं. And अगर आपको ये पसंद आया तो follow करना हमको and share this podcast. Thank you so much and see you next week. Bye bye.